नमस्कार दोस्तों, आज का दिन बड़ा खास है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के 2 कार्यकाल लगभग पूरे होने को हैं। देश 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को भी देख रहा है। आपने देखा चुनावी घमासान शुरू हो चुका है। ऐसे में ये जो 10वां बजट आ रहा है प्रधानमंत्री मोदी सरकार का, ये इस पर सभी की नज़र है। क्या ये चुनावी बजट होगा? क्या इनकम टैक्स में कोई राहत मिलेगी? किस वर्ग को टारगेट किया जाएगा या कोशिश की जाएगी कि उनको राहत दी जाए? स्वास्थ्य योजनाएं हैं, खाद्यान्न की योजनाएं हैं, ऐसी कई बातें हैं जिनको लेकर लगातार चर्चा होती रही। कभी रेवड़ी की बात कही गई तो कभी ये कहा गया कि देश को कोविड के बाद में कई आर्थिक संकटों से और परेशानियों से बाहर निकालने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन कुछ बेसिक बातें हैं जो कि एक्सपर्ट से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट शुभ नारायण सिंह जी स्टूडियो में मौजूद हैं। शुभ नारायण जी, आपका स्वागत है। उनसे बातचीत करेंगे और कुछ अहम बिंदुओं को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शुभ नारायण जी ये बताएं कि इस चुनाव में इनकम टैक्स को लेकर किस तरह की उम्मीदें, या आपको लगता है कि इनकम टैक्स को लेकर कुछ घोषणाएं हो सकती हैं या होनी चाहिए? इस बजट में मिडिल क्लास को सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। इस बजट में मिडिल क्लास को, पिछले जो बजट आए हैं अभी तक, मैं देख रहा हूं कि 2017-18 से अब तक मिडिल क्लास को टैक्स में कोई विशेष राहत नहीं मिली है। लेकिन इस बजट में खास उम्मीदें इसलिए हैं क्योंकि ये सरकार के इस टेन्योर का अंतिम पूर्ण बजट है। इसके बाद जो बजट होगा वो इंटरिम बजट होगा, इसलिए मिडिल क्लास में टैक्स को लेके जो उम्मीदें हैं, खासकर ये उम्मीदें हैं कि जो स्लैब का दायरा है वो बढ़े। सेकंड जो है उनका कि जो होम लोन की 24B है उसमें जो सीमा है उसकी इंटरेस्ट के डिडक्शन की, वो भी 2 लाख से कुछ बढ़ा दी जाए। 3 लाख या 5 लाख लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। थर्ड जो 80C का दायरा है जिसमें कि 1.5 लाख की डिडक्शन हमें मिलती है इनकम टैक्स में, वो भी एक इम्पॉर्टेंट डिडक्शन है। उसमें भी मिडिल क्लास उम्मीद कर रहा है कि टैक्स में हमें करीब 3 लाख तक की डिडक्शन उसमें मिले। इसी तरीके से 80D जो इंश्योरेंस से रिलेटेड है, हेल्थ इंश्योरेंस, तो उसके लिए भी लेके सरकार से उम्मीद है कि इस बजट में कुछ राहत ज़रूर आएगी और उसकी सीमा जो नॉन सीनियर सिटीजन को 25,000 है वो बढ़ा दी जाए और सीनियर सिटीजन की जो 50,000 है वो भी बढ़ा दी जाए। और सेकंड जो 2 तरीके की टैक्स रिजीम चला रही है सरकार, एक रेगुलर टैक्स रिजीम जिसे हम ओल्ड टैक्स रिजीम भी बोलते हैं, और न्यू टैक्स रिजीम जिसमें जो सरकार लाई थी फाइनेंशियल ईयर 2021 से। तो ये देखा गया है कि जो न्यू टैक्स रिजीम है उसकी और लोग अभी तक अट्रैक्ट नहीं हुए हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 5% लोग भी न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट नहीं हुए पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में। इसलिए सरकार से लोगों को ये उम्मीद है कि उसमें भी कुछ टैक्स की छूट का दायरा बढ़ाया जाए और साथ साथ जो है उसमें कुछ इस तरीके की रिलीफ या डिडक्शन साथ में प्रोवाइड किए जाएं और उसके भी स्लैब का भी दायरा बढ़ाया जाए, जिससे लोगों में न्यू टैक्स रिजीम के प्रति भी अट्रैक्शन बढ़े और लोग उसको भी अपनाएं। तो अब जो देखा गया है कि हमारे बजट में मिडिल क्लास, गरीब, बिजनेसमैन, हर किसी को जो है जो जिस उसमें है अपनी राहत की उम्मीद कर रहा है। या आप जब बोल रहे हैं ना, तो जैसे हम बर्तन बनाने वाले या ODOP के तहत, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत, मैंने उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर जाकर देखा कि छोटे छोटे कारोबार होते हैं। बर्तन बनाने का है, मूर्ति बनाने का है, बहुत सारे ऐसे कारोबार होते हैं। और MSME को लेकर या छोटे कारोबार, आपने खुद कहा उद्योगों को लेकर, उद्योगों में भी MSME यानी मिडिल लेवल के या बहुत छोटे लेवल के जो उद्योग होते हैं उनको ज़्यादा प्रोत्साहित करने का प्रयास, क्योंकि इससे रोजगार ज्यादा जनरेट होता है। और विपक्ष के आरोप भी आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को तो पैसा मिल रहा है, छोटा उद्योगपति या फिर जो बहुत कम पूंजी के साथ काम करने वाले लोग हैं उनको उतना फायदा नहीं मिल रहा है। इनको लेकर आपकी क्या सोच है? और क्योंकि कई आपके क्लाइंट्स भी होंगे जो आपको लगता होगा कि बहुत छोटे लेवल पर या उद्योग कर रहे हैं, उनके सामने कैसी चुनौती होती है, उनकी क्या उम्मीदें हो सकती हैं इस बजट से? प्रवीण जी, आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है। ये जो रिटेल सेक्टर है जिसमें छोटे कारोबारी आते हैं जो बहुत ही छोटे लेवल पे बिजनेस करते हैं, जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे ही जनरली होता है, इनको इस बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि उनको 2 तरीके से सरकार बेनिफिट देना चाहेगी। एक तो इनकम टैक्स में कुछ राहत देके, और सेकेंडरी जो इनको जो लोन प्रोवाइड किया जाता है माइक्रो स्मॉल MSME को, तो इनको लोन में जो इंटरेस्ट
का बेनिफिट दे सकती है सरकार, वहाँ भी कुछ रिबेट दे सकती है कि इनको जो लोन प्रोवाइड करे सरकार वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से प्रोवाइड करे, प्लस इनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करे जिससे इनको जो है अपना बिजनेस को बढ़ाने में मदद मिले। तो छोटे कारोबारी, खासकर ये जो रिटेल सेक्टर है, इस पे बजट से इस रिटेल कारोबारियों को बहुत ज़्यादा उम्मीद बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार इस समय वैश्विक मंदी चल रही है उसके दौरान भी सरकार ने जो मेंटेन कर रखा है कि यहाँ पे उसका फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं दिखा है। तो इस सरकार से और भी ज़्यादा उम्मीदें लोगों की बढ़ जाती हैं कि इस सेक्टर में भी लोगों को इस तरीके की रिलीफ मिले जिससे ये छोटे बिजनेस को फिर से बढ़ने का मौका मिले। जी, दूसरा ये आप जब कंप्यूटेशन करते होंगे या आपके जितने भी क्लाइंट्स होंगे उनके अकाउंट्स को जब आप देखते हो तो आपको क्या लगता है कि इनको इस चीज़ की ज़रूरत है या इस बात की डिमांड करते हैं ये लोग? किस चीज़ की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है कि ये काम हो जाए तो सरकार ने हमको राहत दे दी? या आपको भी लगता है कि इन लोगों के लिहाज से जो मिडिल क्लास है, हम बार बार कह रहे हैं मिडिल क्लास को राहत, इसलिए क्योंकि एक बड़ा सेगमेंट है जो हमेशा जब भी बजट आता है मैंने देखा है कि बड़ी उम्मीद की निगाहों से वो देखता है, और ये भी कहा जाता है कि अमीर और अमीर हो गया, गरीब को बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है, सबसे ज़्यादा जो बोझ आता है वो मिडिल क्लास। इस तरह की देखिए ये एक राजनीतिक जुमलेबाजी तो होती है, इसकी हकीकत कितनी है और क्या सचमुच इस वर्ग को राहत देने के लिए कुछ बड़े डिसीजन या बदलाव की जरूरत, क्या होगा क्या नहीं होगा, पर किन बदलावों की जरूरत है वो आपको क्या लगता है? देखिए, जो खासकर जो रिटेलर हैं और जो छोटे उद्योग वाले हैं वो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसलिए भी रहती है क्योंकि जो बड़े उद्योगपति हैं उनके पास सारे तरीके की टेक्नोलॉजी, डिजिटल प्लेटफॉर्म और पब्लिसिटी हर चीज़ है, तो वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और जो छोटे उद्योग हैं वो पीछे होते जा रहे हैं। तो सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि उनको भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जोड़े जिससे उनके कस्टमर भी इधर उधर शिफ्ट ना होने पाएँ। मेरा ये नज़रिया है कि उनको इस तरीके की सरकार मैंडेटरी प्रिविलेज प्रोवाइड करे जिससे कि ये वाला जो सेक्टर है जो बराबर नीचे की ओर जा रहा है उस और सरकार का अगर रुझान थोड़ा बहुत भी अगर इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो इनको बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो इनको लोन की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, लोन मिलने में बड़ी दिक्कतें आती हैं, उसको थोड़ा सरल बनाना चाहिए और इनको आसानी से लोन प्रोवाइड हो जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट सस्ती हो, टैक्स में जो है इनको बहुत ज़्यादा कंप्लाइंसेज का दायरा ना हो, मिनिमम कंप्लाइंसेज से ये अपनी फाइलिंग वगैरह जो इनकम टैक्स की हो सकती हैं कर सकें। खासकर प्रेजेंटेटिव टैक्सेशन का दायरा अगर सरकार बढ़ा सकती है तो उस और इसमें ध्यान देना चाहिए। इस तरीके से छोटे छोटे बुनियादी चीज़ें करके सरकार इनको बहुत कुछ दे सकती है। जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो शुभ नारायण सिंह जी ने बताई है कि मिडिल क्लास को राहत देने के लिए कई सारे प्रयास किए जा सकते हैं। अब एक बहुत अहम बात ये होती है कि बार बार आपने देखा है कि प्रश्न उठता है कि ये एक चुनावी बजट है, बड़ा आप सुन रहे हैं और आपने खुद भी जैसा शुरुआत में कहा कि एक इंटरिम बजट जो है अब वही इसके बाद पेश हो सकता है, वो चुनावी साल रहेगा। तो 2024 के पहले ये जो बजट है इसका क्या महत्व है? और ये अभी तक क्योंकि आपने कई बजट देखे होंगे, तो जब भी चुनाव के पहले बजट आता है उसमें ये जो चुनावी बजट शब्द है या किसी तरह से एक इंप्रेशन बताया जाएगा या सरकार पूरी ताकत लगा देगी कि लोगों का हित दिखाया जाए, वो मैं समझना चाहूंगा कि वो कैसे होता है और कौन से बिंदु होते हैं जिन पर काम करते हुए ये दिखाया जा सकता है कि हाँ हमने लोगों के लिए अच्छा काम किया या हम अच्छा काम करने जा रहे हैं लोगों के लिए। चुनावी बजट इसलिए है कि 2024 में हमारा जो इलेक्शन ड्यू है उसके ठीक पहले ये कंप्लीट बजट है, तो सरकार इसमें बहुत सारे बिंदुओं पे ध्यान दे सकती है क्योंकि अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आए हैं उसमें सरकार ने जो पीछे काम किए हैं उसमें काफ़ी पॉजिटिव संकेत मिले हैं। उसमें हमारी जो इस समय इंटरनेशनल मार्केट में जो रिसेशन चल रहा है उसके नज़रिए से भारत काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है क्योंकि भारत की जो जीडीपी का इन्होंने अनुमान लगाया है कि नेक्स्ट ईयर में फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 6 से 6.8 तक रहने की संभावना है। तो उस नज़रिए से ये भारत के लिए काफ़ी अच्छा साइन है। और सेकेंडली जो चुनावी बजट होने की वजह से जो लोगों की उम्मीद है कि जो बेरोजगारी की प्रॉब्लम है उसमें भी सरकार बहुत कुछ प्रयास करेगी जिससे कि बेरोजगारी की समस्या और कम हो जाए और सरकार इसमें प्रयास लगातार कर भी रही है। थर्ड जो है सरकार का ये भी इसमें उद्देश्य होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से बढ़ाया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर पे विशेष ध्यान देगी सरकार इस बजट में क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से रोज़गार तैयार होंगे, रोज़गार के अवसर मिलेंगे और सेकेंडरी बाहर की कंपनियों को भी अगर प्रिविलेज मिलती है तो हमारे यहाँ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आएगा, उससे भी हमारे यहाँ रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। तो ये
चुनावी बजट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि सरकार को सबको संतुष्ट करना है और सरकार इस बजट में बैलेंस रखने का प्रयास करेगी। जी जी, तो शुभ नारायण जी, मुझे एक चीज़ ये भी छोटा सा आप ज़रूर बताएं कि क्या जब हम छोटे उद्योगों की बात करते हैं तो सरकार पर कितना बोझ आता है? क्योंकि देखिए, बजट का मतलब ये है कि हमारी इनकम क्या होगी और खर्चा क्या होगा, ये दो चीज़ें हमको मैनेज करना, इसी को बजट कहते हैं, जैसे घर का बजट बनता है। तो अभी जब चुनावी बजट होता है तो क्या सरकार कुछ नुकसान या अपने ऊपर कुछ बोझ ले लेती है, या आपको लगता है कि इस बार जो चुनावी बजट होगा उसमें सरकार पर कुछ बोझ आएगा ताकि जनता को राहत मिल पाए? आमतौर पर हमने देखा जनता पर बोझ आता है ताकि सरकार को अपना कामकाज चलाने के लिए पैसा मिलता रहे। बिल्कुल सही बात है। जब बजट कोई भी हो, सरकार विकास की योजनाओं के लिए सरकार को पैसे की ज़रूरत होती है और इसके लिए सरकार के पास जो सोर्स हैं, दो तरीके के सोर्स हैं। सरकार एक तो इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी के थ्रू कलेक्शन कर रही है और जो मेन सोर्स ऑफ सरकार के रेवेन्यू का रहता है, और सेकेंडरी है अपना डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स के कलेक्शन के थ्रू सरकार जो है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और जो जनता के लिए जो भी सुविधाएं और चीज़ें ज़रूरी हैं वो सबके लिए सरकार दूसरा टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्स से कलेक्शन करती है। लेकिन इस दौरान जनता की उम्मीदें इतनी ज़्यादा हैं कि सरकार के ऊपर जो है टैक्स का सरकार के ऊपर इतना ज़्यादा बोझ पड़ता है कि सब किसी को संतुष्ट हमें करना है। तो सरकार जो है इसके सामने ये समस्या होती है कि जनता की उम्मीद है कि टैक्स ना बढ़ाया जाए, लेकिन सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, लोगों को रोज़गार देने हैं, लोगों को जो है हेल्थ की सुविधाएं देनी हैं, लोगों को जो है और डिफेंस सेक्टर में भी हमें पैसे की ज़रूरत है। तो सरकार के सामने बहुत सारे इशू होते हैं। ऐसे में सरकार जो है किस तरीके से अपने को करती है, मैनेज करती है, तो सरकार अपना पूरा वो देखती है कि हमारे पास जो है फ्यूचर में एक्सपेक्टेड रेवेन्यू किन किन जगह से हो सकते हैं, हमारे पास फॉरेन से कितना कंट्रीब्यूशन आ सकता है निवेश के थ्रू, हमारे पास डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन कितना हो सकता है, हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन कितना हो सकता है। जैसे इस बार जो जनवरी में है काफ़ी अच्छा कलेक्शन हुआ है। तो सरकार इस तरीके से अपना बजट मैनेज करके और लोगों को जो है अवसर प्रदान करती है। जी, और जब शुभ नारायण जी बोल रहे हैं तो जैसा मैंने कहा आपको कि आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, सिर्फ राजनीतिक नहीं, ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैंने खुद अपना अनुभव आपसे साझा किया। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये तो उत्तर प्रदेश में तो देखा, पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप छोटे लघु उद्योगों को किस तरीके से विकसित करते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आगरा है तो लोहे का बहुत छोटी छोटी जगह पर व्यापार होता है, या आप मुरादाबाद जाएंगे या अन्य जगह तो आपको पीतल का कारोबार जो है वो कई जगह पर देखने को मिलेगा। आप हाथरस जाएंगे तो हींग और गुलाल के आपको छोटे छोटे कारखाने देखने को मिलेंगे। आपको मूंज का काम सुल्तानपुर और आसपास के कई क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। तो ये, और आप विश्वास करिए वहां की बड़ी आबादी जो है वो डिपेंडेंट होती है इस तरह के छोटे छोटे उद्योगों पर। तो ये जो छोटे उद्योग होते हैं इनको आगे बढ़ाना सचमुच में देश को, अगर आपको रोजगार की समस्या से ऊपर निकालना है, प्रोडक्शन को बढ़ाना। और देखिए प्रोडक्शन का मैं शुभ नारायण जी एक बड़ा अच्छा उदाहरण हमेशा हमारे सामने होता है। हम जब मैं स्टार्टअप्स और इन लोगों के लिए काम कर रहा था तब भी मैंने ये इस चीज़ का अनुभव किया कि बांग्लादेश एक बड़ा उदाहरण है कि रेडीमेड गारमेंट्स के मामले में पूरी दुनिया की इकोनॉमी में उसने अपने आप को एस्टेब्लिश किया है। बांग्लादेश की चाहे जो आर्थिक हालत हो, लेकिन आज उसकी बैकबोन एक इंडस्ट्री रेडीमेड गारमेंट से चलती है। ऐसा नहीं कि भारत में वो इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन जिस तरह का लेबर वहाँ पर है, जिस तरह का काम वहाँ पर होता है, सरकार ने जो सुविधाएं दी हैं उसने उस उद्योग को बढ़ने में मदद की। चीन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जहाँ पर हम देखते हैं कि उद्योगों को या प्रोडक्शन को, पूरी दुनिया का प्रोडक्शन हासिल, आज चीन की जो स्थिति है वो एक अलग बात है, लेकिन चीन के औद्योगिक विकास या चीन की जो ताकत बढ़ी है उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पूरी दुनिया ने देखा है उसको कि चीन ने कैसे अपने आप को डेवलप किया और उसने कैसे उद्योगों को बढ़ावा दिया। भारत का विजन लगभग वही दिखाई देता है, लेकिन इसके क्रियान्वयन की तरफ बढ़ना बहुत आवश्यक है। और इसके क्रियान्वयन की तरफ बढ़ने में ये जो बजट होता है ना, ये इसका अलोकेशन और आप लघु उद्योगों को बढ़ावा देने में या किस तरह की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसकी बात हमेशा की जाती है। मैं इस पर आपसे जरूर एक टिप्पणी चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर छोटा उद्योग करना कितना आसान कार्य होता है, या आसान तो नहीं होता, ये तो खैर एक मोटे तौर पर मैं, लेकिन आप एक्सपर्ट हैं तो आप ज़्यादा बताएंगे क्या मुश्किलात आती हैं जिनको हल करने की ज़रूरत है और सरकार को ध्यान देना चाहिए। प्रवीण जी बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है आपने।
आपने जो एग्जाम्पल जैसे आगरा का दिया, इसी तरीके से कानपुर लेदर उद्योग के लिए फेमस है, आपका फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए फेमस है। तो इस तरीके से जो वहाँ के जो लोकल उद्योग हैं उसके लिए भी सरकार को जो है विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है इस बजट में, जिससे कि लोग जो है रोज़गार की तलाश में उस शहर से, बड़े शहर की ओर शिफ्ट ना होकर वहीं पे रुक जाएं। इससे हमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि उसी शहर में, जो शहर जिस चीज़ के लिए, प्रोडक्शन के लिए फेमस है, जैसे आपने बताया कि मुरादाबाद का एग्जाम्पल दिया, कानपुर है, तो वहाँ पे उस सेक्टर में जो विशेष उद्योग हैं उनको बुनियादी ढांचा प्रोवाइड करे सरकार, जो उनकी विशेष ज़रूरतें हैं और जिस तरीके का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उस पर जो है कुछ इस तरीके की उनको राहत प्रोवाइड करे, छूट प्रोवाइड करे, और उस सेक्टर में मशीनरीज वगैरह जो यूज होती हैं उसमें जीएसटी वगैरह में कंसेशन दे। तो जो बुनियादी स्ट्रक्चर अगर सरकार उनको वहीं प्रोवाइड कर देगी तो बहुत सारे लोगों को उस उद्योग से वहाँ पे रोजगार भी मिलेगा, और वो जो विशेष उद्योग पर्टिकुलर शहर से जो बिलोंग करते हैं उनके विकास में काफ़ी मदद मिलेगी। तो सरकार को इस बुनियादी स्ट्रक्चर, वहाँ की मैन पावर, वहाँ पे क्या सुविधाएं जरूरी है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी, ये सारी सरकार को अपना एक एनालिसिस करके और शहर वाइज जो है ये चीज़ जो है कवर करनी चाहिए अपने नज़रिए से। तो इन छोटे उद्योगों को बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा। प्रवीण जी, मैं चाहूँगा कि आप जितने भी दर्शक अभी हमारे साथ बने हुए हैं वो जुड़ते रहेंगे। बहुत सारे लोगों की बहुत सी अपेक्षाएं हैं इस बजट को लेकर। इन अपेक्षाओं के साथ साथ में आपके जो भी सवाल हों वो आप एक्सपर्ट्स के सामने रख सकते हैं। एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि आखिर किस तरीके से इस बजट के जरिए कई सारी चीज़ों को साधने का प्रयास किया जाएगा। शुभ नारायण सिंह जी मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। बहरहाल इसमें एक बड़ी अहम बात यह है कि हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, और जब बजट आता है तो इन सारे बिंदुओं पर बातचीत होती है, लेकिन ये कोई एक दिन का काम नहीं होता। हाँ, बजटिंग तैयार कर ली जाती है, हमारी कमाई इतनी जगह से हो रही है, हमारा घाटा इतना है, हम आगे इतना फायदा करने की, या विकास दर आप जब कहते हैं, मैं चाहूंगा कि आप शुभ नारायण जी थोड़ा ये विकास दर को 6.8 का आप कहा गया है कि 6.8 तक ले जाए, ये जो आंकड़े होते हैं ये आंकड़े कितने अहम होते हैं और आम आदमी को कभी समझ में नहीं आते। उसको कोई मतलब नहीं विकास दर कहाँ जा रही कहाँ नहीं जा रही, उसको ये समझ में आता है कि आटे दाल के भाव क्या चल रहा है, पेट्रोल डीजल का भाव क्या चल रहा है, महंगाई की क्या स्थिति चल रही। आंकड़ा और जमीनी हकीकत, इनको थोड़ा सा समझाएं आप आसान भाषा में, कि आप जैसे किसी को समझा रहे हो कि आम व्यक्ति को समझ में आ जाए, बहुत कोई जो फाइनेंसेस का एक्सपर्ट ना हो उसको भी समझ में आ जाए कि भाई इसके मायने ये होते हैं और विकास का मतलब ये होता है। देखिए, विकास के मायने अगर देखा जाए तो ये एक ब्रॉड टर्म है। इसमें जो है आम भाषा में लोगों को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो कई जगह से फोरम से एनालिसिस करके प्रोस्पेक्टिव मार्केट का, जैसे कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, और किस इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री बूम पे है, कौन सी इंडस्ट्री नीचे की तरफ जा रही है। तो सरकार इन सारे एनालिसिस को करके एक एनालिसिस करती है, उसके बेसिस पे उनके जब सेक्टर वाइज आंकड़े आ जाते हैं कि इस सेक्टर से ये ग्रोथ की संभावना है, केमिकल सेक्टर से ये ग्रोथ की संभावना है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से, रियल एस्टेट से, इस तरीके से सेक्टर वाइज जब कई जगह से आंकड़े आते हैं उस बेसिस पे सरकार अपने जो यहाँ का कि रेवेन्यू हैं और यहाँ की जो एक्सपेंडिचर हैं, बहुत सारी चीज़ों को तालमेल करके उसका एक डेटा निकालती है। तो ये अपना विकास दर का एक एस्टिमेटेड आइडिया लगता है। विकास दर एक्चुअल में कितनी होगी ये समय के साथ चीज़ें कन्वर्ट होती चली जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन पे आम आदमी के समझने के लिए तो सबसे अच्छा तरीका ये है, आम आदमी के समझने के लिए तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर विकास दर, अगर हमें रोजगार मिल रहे हैं, हमारी इनकम के सोर्सेज बढ़ रहे हैं, हमारी सैलरीज बढ़ रही हैं, तो हमारे लिए विकास दर इम्पॉर्टेंट है। महंगाई कम होती जा रही है और जो हमारी ज़रूरी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, उनके रेट और उन पे जीएसटी का लोड भी कम होता जा रहा है। तो आम आदमी तो इस नज़रिए से इसको विकास दर मान के चलता है। प्रवीण जी, जी चलिए, और अब थोड़ी देर में बजट का भाषण शुरू होने वाला है। ये भाषण हिंदी में आपको यहाँ पर अमर उजाला के सभी प्लेटफॉर्म्स पर, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, हमारी वेबसाइट हो amarujala.com, हर जगह पर सुनने को मिलेगा। निर्मला सीतारमण अपने पिटारे में क्या कुछ लेकर आई हैं वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ में अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये बजट किस तरह का रह सकता है। चुनावी बजट है तो चुनावी बजट के लिहाज से हम ये भी देख रहे हैं कि कौन कौन सी वो बातें हैं जो राहत की श्रेणी में आ सकती हैं।
amarujala.com के संपादक जयदीप कर्णिक भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। जयदीप जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जयदीप जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आप तक नहीं आ पाएगी अभी। जयदीप जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि क्या आपको लग रहा है कि क्या मिडिल क्लास को राहत या इनकम टैक्स में राहत जैसी बहुत सी बातें हैं और चुनावी बजट भी कहा जा रहा है, इसके मायने ज़रा समझे जाएं कि चुनाव में किस तरीके से मिडिल क्लास को या किसी भी तरीके से आप जनता के बीच में एक इंप्रेशन दे कि हाँ, हम आपके हित का या आपको राहत देने वाला, या क्योंकि 10वां बजट भी है और चुनावी साल के पहले का बजट है, फिर इसके बाद तो इंटरिम बजट ही आना है, तो ऐसे में क्या क्या बातें हैं जिनका ध्यान रखा जा सकता है इस बजट में? देखिए प्रवीण, निश्चित ही इसको चुनावी बजट तो इसीलिए माना जा रहा है कि 2024 में चुनाव होंगे और हम चुनाव की उम्मीदों पर खरा उतरेंगी निर्मला सीतारमन। उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की है, तो इससे संकेत यही कहा गया है कि सभी, तो मुझे लगता है इसमें मध्यम वर्ग का खास तौर पर ध्यान रखे जाने की बात रहेगी, क्योंकि बड़ा वोटर है और हमेशा पिछले जितने भी बजट इस सरकार के आए हैं उसमें मध्यम वर्ग को ऐसा ही लगा है कि हमारे लिए कुछ नहीं है। वो इसलिए कि सबसे बड़ी बात होती है कि आदमी जो आमदनी है उसकी, उसमें बढ़ोतरी कैसे हो, तनख्वाह अगर नहीं बढ़ रही है तो क्या टैक्स में छूट मिलेगी, उससे उसके पास खर्च करने के लिए अतिरिक्त पैसा होगा, ये आम आदमी की हमेशा चिंता रहती है। लेकिन इसमें बड़ी राहत नहीं मिली। निर्मला सीतारमन जी से जब अभी एक सेमिनार में पूछा गया कि आप आम आदमी को राहत क्यों नहीं देती, तो उन्होंने कहा कि हमने सीधे जेब में पैसा नहीं डाला मिडिल क्लास की, लेकिन हमने स्मार्ट सिटीज़ बना दी है, हमने आधारभूत संरचना अच्छी कर दी है, हमने बी क्लास टाउन्स को ज़्यादा लिवेबल बना दिया है। उनकी ये बातें अपने स्तर पर एक आर्थिक विशेषज्ञ के रूप में सही हो सकती है, लेकिन इन सबसे आम आदमी की ज़िंदगी में जो सीधा सुधार आना चाहिए वो उसको उस तरीके से महसूस नहीं कर पाता। एक ऐसे दौर में जब हम देखते हैं कि पिछले 3 साल के सबसे कम विकास दर की घोषणा इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में हुई है, एक ऐसे समय में जब लोगों को लगता है कि आर्थिक मंदी जो पूरे विश्व में दस्तक दे रही है उसके चलते नौकरियों पर संकट आ सकता है, तो व्यक्ति को सबसे पहले अपनी बजट की, अपने परिवार की सुरक्षा सताने लगती है, अपनी नौकरी की चिंता सताने लगती है, और उसको लगता है कि अगर मेरी तनख्वाह में जितना इजाफा मैं चाहता हूँ वो नहीं भी हो रहा है तो क्या टैक्स में थोड़ी राहत मिलने से मैं कुछ ज़्यादा पैसा कमा लूँ, अतिरिक्त आय मेरी होने लगे उस वजह से जो मेरे पास खर्च के लिए हो। देखिए, इसमें बहुत सारे तार्किक बातें हम देखते हैं। हर बार जब भी बजट आता है तो सोशल मीडिया पर आम आदमी को लेकर तरह तरह के मेम्स आजकल बनने लगते हैं, बातें होती हैं, लेकिन उन बातों में बहुत दर्द भी है और बहुत सच्चाई भी है प्रवीण। अगर हम देखें कि डायरेक्ट टैक्स देने वाला भी सबसे बड़ा जो वर्ग है वो मध्यम वर्ग ही है, जो नौकरी पेशा वर्ग है, क्योंकि तनख्वाह हाथ में आने से पहले ही सारा टैक्स कट चुका होता है, जो जिस स्लैब में है उसका वो टैक्स कट चुका होता है। इससे आगे जाकर बाजार में किसी भी चीज़ पर हम खर्च करते हैं, पहले अलग अलग टैक्स लगते थे, अब जीएसटी लगता है, लेकिन लगता है पानी की बोतल से लेकर कार खरीदने तक जो भी साधन हम जुटाते हैं मध्यम वर्ग के लोग, उस पर हमको अलग से फिर टैक्स देना पड़ता है। यानी जो हाथ में रुपया आया है वो अगर हम 10% के भी स्लैब में है मान लीजिए, तो हमने 100 रुपये की बजाय 90 रुपये लिए हैं। उस 90 रुपये में से अगर मैंने पानी की बोतल खरीदी है तो उस पर भी टैक्स दिया, तो 12 से 15% का टैक्स लगभग हर वस्तु पर लग ही रहा है। तो कुल मिलाकर मेरे पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं बचा है, और इसलिए आम आदमी जो है, मध्यम वर्ग जो है, वो उम्मीद करता है। आप ये देखिए कि डायरेक्ट टैक्स में तो सबसे बड़ा योगदान है ही, लेकिन जिसको हम अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, जिसमें कि ये सारी वस्तुओं के माध्यम से टैक्स लग रहा है, इनकम टैक्स नहीं लग रहा है, उनका उपभोग करने वाला भी सबसे बड़ा वर्ग कौन है हिंदुस्तान में? वो मध्यम वर्ग ही है, जाहिर है। तो उस मध्यम वर्ग को इस तरह की उम्मीदें होना गलत भी नहीं है। ये सरकार इस बात के लिए तो हमेशा से घेरे में रही है सवालों के कि आप मध्यम वर्ग को सीधे सीधे वैसे लोक लुभावन पेशकश अपने बजट में नहीं देते जो कि पहले की सरकारों की रवायत रही है। अब इस बार चूंकि 2024 का चुनाव इस सरकार के लिए बहुत बड़ा है, तो मुझे लगता है कि इस बार उम्मीदें बहुत ज़्यादा है। इन उम्मीदों पर ये निर्मला सीतारमन और मोदी सरकार कितना खरा उतरती है, इसमें अब ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है उनके और हमारे बीच में। चंद मिनटों बाद ही बजट पेश हो जाएगा और आप और हम बैठकर उसका आकलन करेंगे यहाँ पर amarujala.com पर। इन प्रश्नों की अगर बात करें तो इनमें जैसे क्रिप्टो का टैक्स भी कम करे सरकार, एक जपातियापुर, इनका पता नहीं है असली नाम है या किसी जगह का नाम है, खैर, लेकिन इनका सवाल इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर बहुत सारी बातें होती रही हैं, उसके लीगलाइजेशन को लेकर या उसको लेकर कई बार कई बातें और कई संदेह जो हैं लोग जाहिर भी करते रहे।
इसके टैक्स को लेकर या इस पर आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे क्रिप्टो करेंसी को लेकर? मुझे लगता है प्रवीण, जिसने भी सवाल किया बहुत अहम सवाल है। देखिए, एक बहुत बड़ा युवा वर्ग, खास तौर पे मैंने देखा है, आसपास के ही लोग हैं, घर परिवार के आसपास के लोग, दफ्तर के लोग, सबको क्रिप्टो को लेकर एक नशा सा चढ़ गया था। उनको लगा कि ये नया निवेश माध्यम है जिसमें पैसा लगाते ही सही अचानक से 20%, 30%, 100% तक का यानी पैसा दुगना हो जाएगा। ऐसे सब्जबाग लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से देखे। क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसमें कैसे निवेश होगा, क्यों निवेश होगा, ये जाने समझे बगैर पिछले बजट में जो सबसे बड़ी घोषणा आई थी वो क्रिप्टो को लेकर ही आई थी। और इसलिए जाहिर है जो भी लाइव में हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं उन्होंने इसको लेकर सवाल पूछा है, और सवाल पूछना उनका लाजमी है। वो इसलिए कि शायद उनका पैसा फंसा और वो सोच रहे हैं। इस सरकार ने एक बड़ी बात यह की थी कि क्रिप्टो करेंसी को अवैध घोषित नहीं किया था, क्रिप्टो करेंसी को गलत नहीं घोषित किया था, उसको भारत में कारोबार पर रोक नहीं लगाई थी, लेकिन उस पर टैक्स लगा दिया। मैं तो कहता हूं इस तरीके से आपने एक तरीके से क्रिप्टो करेंसी को वैध घोषित कर दिया, क्योंकि आप उस पर अगर टैक्स ले रहे हैं, जिस भी पैसे पर आप टैक्स ले रहे हैं, तो फिर पैसा अगर मान लीजिए मैंने अपने तनख्वाह पर टैक्स दिया है तो वो मेरी तो सारी लीगल है ना, सारी तनख्वाह, मैंने कोई काला पैसा तो नहीं है मेरे पास। तो इसलिए इसमें दुविधा बड़ी हो गई है लोगों के लिए कि क्रिप्टो करेंसी को आपने चलन से बाहर नहीं किया, उसको अवैध घोषित नहीं किया, क्रिप्टो के कारोबार में जो गोरख धंधा हो रहा है, गड़बड़ियां हो रही हैं, उसको रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन उस पर टैक्स लगा दिया। तो सरकार ये चाहती कि आप चाहे भी जिस तरीके से पैसा कमा लें, सही हो गलत हो, उसमें रिस्क हो नहीं हो, रिस्क आप लीजिए, लेकिन अगर आप रिस्क लेकर भी पैसा कमा रहे हैं तो उसका पैसा हमें दे दीजिए। तो ये जो भी दर्शक हमसे जुड़े इनका दर्द समझा जा सकता है। आज हमारी निगाह रहेगी अगर क्रिप्टो को लेकर उसके एवज में भारत अपनी खुद मुद्रा लाने की घोषणा हुई थी और उसकी औपचारिक घोषणा भी कुछ समय पहले हो चुकी है। देखना आवश्यक होगा कि एक ऐसे समय में जब क्रिप्टो करेंसी पूरी दुनिया में ही अचानक से दम तोड़ती नजर आ रही है, दुनिया कुछ अलग ही तरह के आर्थिक संकटों में उलझी हुई है और उसमें क्रिप्टो तो अब फिलहाल हाशिए का मुद्दा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्रिप्टो को भविष्य की मुद्रा मानकर उसमें निवेश किया था और आज भी क्रिप्टो करेंसी के पीछे जुड़े हुए लोग इसको जिंदा रखने में, इसको चलाए रखने में और इसके अच्छे दिन आने की उम्मीद में बैठे हुए हैं। तो आज के बजट में क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्या घोषणा होती है देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि पिछली बार तो एक बड़ी घोषणा हो गई थी जिसको लेकर बहुत असमंजस भी रहा लंबे समय तक। और मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि केवल amarujala.com पर ही क्रिप्टो करेंसी को लेकर जो घोषणा हुई थी उसका सही तरीके से विश्लेषण करके खबरें प्रसारित की गई थी। तो आज भी अगर आपको लगता है कि कोई भ्रम की स्थिति पैदा नहीं हो जो भी बजट की घोषणा है उनको लेकर, तो आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं पिछली बार का अनुभव आपसे साझा करना चाहता हूं। अधिकतर मीडिया हाउस, नाम लेने के, लेकिन सभी में क्रिप्टो करेंसी को लेकर बहुत सारी ऐसी खबरें आई थी जो घोषणा की वजह से गफलत थी, शुरुआती उस गफलत से भरी हुई थी। लेकिन हमने amarujala.com पर आपको बताने की कोशिश की थी कि क्रिप्टो करेंसी को अवैध घोषित नहीं किया गया, उस पर सरकार ने बल्कि टैक्स अगर लगा दिया है तो उसके मायने क्या हैं। उसी को लेकर अगर कोई और घोषणा आज होती है तो निश्चित ही हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, आपके साथ शुभ जी बैठे ही हुए हैं और भी विशेषज्ञ अमर उजाला के दफ्तर में इंतजार कर रहे हैं कि बजट पेश हो और वो उसका विश्लेषण हमारे amarujala.com के सभी पाठकों दर्शकों तक पहुंचाएं। तो हमारी निगाह इस पर करीब से बनी रहेगी प्रवीण की क्रिप्टो को लेकर आज के बजट में क्या घोषणा होती है। लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा या तमाम दर्शकों को, सबका इंतज़ार इस बात को लेकर है, शिव जी मैं आपकी इजाज़त से बात कह रहा हूँ कि क्रिप्टो तो ठीक है लेकिन एग्रीकल्चर के लिए क्या होने वाला है, क्योंकि क्रिप्टो से लेकर एग्रीकल्चर तक ये जो इकोनॉमी है ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एक साथ बांधती है। आजकल बहुत टाइप बी और टाइप सी सिटीज़ में देखा है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग बाग इस डिजिटल करेंसी में, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि उनको बहुत ही आसान पैसा दिखाई देता है। पर सरकार क्या इसको रेगुलेट करने की कोशिश करेगी? क्या सरकार, जैसे मैंने सुना, आई डोंट नो, मैंने कहीं पढ़ा किसी अखबार में कि ऑनलाइन गेमिंग पर जो आप अभी तक की 10,000 रुपये तक की कमाई थी उस पर कोई टैक्स नहीं था, सरकार उसको टैक्स के दायरे में लाना चाहती है, यानी आप जो गेम खेलते रहते हैं वो भी अब टैक्सेबल होने वाला है। तो ये जो डिजिटल के ज़रिए पैसा कमाने की तैयारी सरकार की चल रही है, अपना खजाना भरने की तैयारी चल रही है, वो एक कोशिश हो सकती है न सिर्फ अपना खजाना भरने की बल्कि ये दिखाने की कि भी हर कुछ आसानी से मुफ्त में उपलब्ध नहीं हो सकता। अगर आप कुछ कमाएंगे आपको तो उसके लिए आपको सरकार को टैक्स देना होगा। शिव जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर क्रिप्टो करेंसी को लेकर आप कितनी उम्मीद कर रहे हैं, आज क्या हो सकता है? पहली बात तो ये क्रिप्टो करेंसी को लेके सरकार को एक रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जिससे उसके रेगुलेशन और लीगलाइजेशन को बल मिले, और सेकेंडरी लोगों को उसके बारे में जानकारी भी प्रॉपरली इनकम टैक्स के थ्रू या और किसी चैनल्स के थ्रू जानकारी भी देनी चाहिए कि इसमें क्या रिस्क हैं और क्या इससे रिवार्ड्स भी हो सकते हैं। और इसमें जो सरकार ने टैक्स रेट रखा हुआ है कि इसमें आप जो भी कमाते हैं,
चाहे लीगल सरकार इसको नहीं भी करे तो भी अगर आप कमाते हैं इसमें, तो सरकार ने इसमें जो टैक्स रेट रखा हुआ है वो 30% का रखा हुआ है, जो मैक्सिमम मार्जिनल रेट के उसमें आता है जनरली। तो उस सिचुएशन पे लोगों को उम्मीदें हैं कि सरकार कम से कम इसका अगर रेगुलेट करे और प्लस इसकी जो टैक्स की रेट है उसमें तो राहत ज़रूर दे। मुझे नहीं पता आप लोग कहाँ तक चर्चा ले चुके हैं, लेकिन एक विषय जो मेरे दिल के बड़े करीब है, मैं उस पर आपको लेकर ज़रूर आना चाहूँगा। बीते 9 बजटों में, ये निर्मला जी का 5वां बजट होने वाला है, टैक्स स्लैब्स में कुछ अंतर नहीं पड़ा है। मिडिल क्लास होने के नाते, इनकम टैक्स पे ही होने के नाते हम सब की कोशिश ये होती है कि कुछ रियायत तो हमको दे दीजिए, हमारी जेब में भी पैसा आ जाए जिसके ज़रिए हम कुछ खर्चा कर सकें। वरना आज की तारीख में खर्चा करने में आदमी डरने लगा है, क्योंकि सारा खर्चा तो पेट्रोल ले जाता है, डीजल ले जाता है, गैस का चूल्हा लेके चला जा रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या 2.5 लाख की लिमिट बढ़कर 5 लाख हो सकती है टैक्स स्लैब्स में? क्या 30% का जो स्लैब है उसको और बढ़ाया जा सकता है या कम किया जा सकता है? आप कुछ बताना चाहते हैं, आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या अपेक्षाएं हैं? बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है सुमित जी आपने। इसमें लोगों की एक्सपेक्टेशन सरकार से बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आपने जो बिल्कुल सही बात बताई कि 17-18 के बाद सरकार ने इन टैक्स की दरों में कोई चेंज नहीं किए हैं। जो रेगुलर टैक्स रेट पहले था वही जो है स्लैब रेट आज भी हमारा चल रहा है। और सरकार जो फाइनेंशियल ईयर 2021 में न्यू टैक्स रिजीम लेके आई थी, उसमें बहुत जो हमारे को जो मेन डिडक्शन होते हैं, जैसे कि सैलरीड क्लास के लिए एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, और होम लोन जो खासकर छोटे छोटे इंडिविजुअल होते हैं जिनकी कम इनकम होती है, उनको होम लोन का जो सेक्शन 24B का डिडक्शन होता है वो 2 लाख रुपए है, वो भी सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम में नहीं दिया था। प्लस 80C का डिडक्शन, 80D का डिडक्शन, वेरियस डिडक्शन थे जो न्यू टैक्स रिजीम में उन्होंने नहीं दिया था, सिर्फ स्लैब में रिलीफ दी थी, जिस वजह से जो न्यू टैक्स रिजीम के प्रति लोगों का अट्रैक्शन है वो बिल्कुल नहीं बना। इवन अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो जिनकी इनकम 10 लाख रुपए भी थी और उनको सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 और प्लस 80C में 1.5 लाख का डिडक्शन लेने के बाद उनको टैक्सेबल टोटल इनकम 8 लाख रुपए रह जाती थी, उन लोगों ने भी ओल्ड टैक्स रिजीम को ही अपनाया। न्यू टैक्स रिजीम में वो लोग भी शिफ्ट नहीं कर पाए। न्यू टैक्स रिजीम में सिर्फ गिने चुने वो लोग पहुंचे जिनकी के पास कोई डिडक्शन नहीं था, कोई होम लोन नहीं था और उनकी इनकम 10 लाख से लगभग ज़्यादा थी। तो ऐसे लोग जनरली उस तरफ शिफ्ट किए। वो भी अगर उसको परसेंटेज में काउंट करें तो 5% भी ऐसे लोग शायद नहीं पहुंच पाए जो न्यू टैक्स रिजीम पे गए। तो सुमित जी, आपका जो क्वेश्चन है कि सरकार इस बजट में क्या राहत दे सकती है, तो मेरा इसमें अपना मानना है कि अगर न्यू टैक्स रिजीम को अट्रैक्टिव बनाना है तो उसमें जो 15 लाख से ऊपर 30% का इन्होंने टैक्स स्लैब रखा हुआ है उसको बढ़ा देना, उसका दायरा बढ़ा देना चाहिए। यानी 15 लाख की बजाय अगर 20 लाख या 25 लाख के ऊपर 30% का स्लैब हो, या जो मैक्सिमम स्लैब रेट इंडिविजुअल के लिए हो वो न्यू रिजीम में 25% का ही हो जाए, और या ओल्ड रिजीम में जो दायरा 2.5 से 5 लाख तक ही एग्जेम्प्ट है वो दायरा भी अगर बढ़ा दिया। खासकर मेरा मानना यह है कि 10 लाख के ऊपर ओल्ड टैक्स रिजीम में जो 30% का टैक्स होता है वो 20 लाख के ऊपर अगर 30% का टैक्स हो जाए तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा। तो सुमित जी, सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं इस सेक्टर में। ये मैं पीछे इतने सालों से बजट कवर कर रहा हूँ जयदीप, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हर बजट के दिन हम लोग इस बात की उम्मीद करते हैं जब सुबह बैठते हैं 11 बजे के पहले कि भाई टैक्स स्लैब में कुछ चेंज होगा, मिडिल क्लास को राहत मिलेगी। मिडिल क्लास जो टैक्स पेयर है सरकार उसी की जेब क्यों काट रही है भाई, जो क्योंकि उसका टैक्स तो कटना ही कटना है, उसी से तो आपकी तमाम योजनाएं चल रही हैं। लेकिन ये साल ऐसा है, दरअसल मैं उम्मीद इसलिए भी कर रहा हूँ शुभ जी और जयदीप, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये बजट का साल नहीं है, ये चुनावी बजट का साल है। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जम्मू कश्मीर को मिला लूँ तो 10 राज्य हो जाएंगे, और इन 9 में से 5 राज्य बड़े हैं, और ये 5 वहाँ वो राज्य हैं जहाँ बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकल कर आए हैं, उस यात्रा को सफल कांग्रेस पार्टी कह रही है, जता रही है। ऐसे में जब कर्नाटक में बीजेपी जाएगी, राजस्थान में जाएगी, छत्तीसगढ़ में जाएगी, मध्य प्रदेश में जाएगी, तो बीजेपी नहीं चाहेगी कि ऐसी कोई भी चीज़ हो जिससे उसकी सरकार बनने में या उसकी सरकार कायम रखने में उसको मुसीबत आए। इसीलिए ये इस साल का इस सरकार का आखिरी संपूर्ण बजट है। अगला बजट अंतरिम बजट के तौर पर आएगा जो कि 2024 में आना है। निर्मला जी जिसको लेकर आएंगी, अगर वो वित्त मंत्री रहती हैं, हालांकि उनके चेंज होने के कोई चांसेस भी फिलहाल नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो जयदीप, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस चुनावी बजट में, मैं इसको साफ तौर पर चुनावी जानबूझकर बोल रहा हूं, एक तो किसानों की जो सम्मान निधि की योजना है
वो 6 लाख रुपए 6,000 रुपए की चल रही है, उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। कल अगर हम आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को पे काफ़ी ज़्यादा फोकस, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट सरकार का वो सर्वे दिखाई देता है। क्या किसानों को राहत 6,000 से बढ़कर 8,000, 9,000, 10,000 तक जाएगी? क्या रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होगा? क्या इनकम टैक्स स्लैब पर सरकार को काम करना चाहिए? क्योंकि ये रूरल और मिडिल क्लास, ये वो तबका है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को न सिर्फ जिंदा रखता है बल्कि साथ साथ भारत के बीजेपी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी यही तबका सबसे इंपॉर्टेंट है चुनावी की दृष्टि से। जयदीप। सुमित, आपने बहुत महत्वपूर्ण और दिलचस्प सवाल पूछा और ये हम सभी के दिल के करीब इसलिए भी कि हम सारे पत्रकार भी उसी वर्ग से आते हैं जिसको उम्मीद होती है कि कुछ राहत मिल जाएगी, और हर बार हम नाउम्मीद से ही रहते हैं और फिर भी उम्मीद लगाए रखते हैं। तो मैं दरअसल इस बात को कहने के लिए अहमद फराज साहब की मदद लूँगा। अहमद फराज साहब की एक बहुत मशहूर नज़्म है, रंजीशी सही दिल ही दुखाने के लिए आ। तो उसमें एक उनका शेर है कि अब तक है दिले खुशफहम को तुझसे उम्मीदें, अब तक है दिले खुशफहम को तुझसे उम्मीदें, ये आखिरी शम्मे भी बुझाने के लिए आ। तो उसमें वो ये उम्मीद तो बनाए हुए है दिल के, इस बार नहीं, और ये चूंकि आखिरी संपूर्ण बजट है, चुनावी बजट है, तो भाई चुनाव के बहाने ही से ही सही, हमारे वोटों को लुभाने के लिए ही सही आ जाओ, और नहीं तो ये उम्मीद जो बची हुई है, ये आखिरी शम्मा है, इसको भी आप इस बजट में अगर नहीं देते हैं तो उसको हम बुझा देंगे कि भाई चलो इस बार भी चुनावी बजट था, कुछ नहीं मिला। तो मैं यही कहूँगा कि जो मध्यम वर्ग होता है, इसके पहले भी हम ये बात कर रहे थे, उसका जीवन अपनी तनख्वाह और उससे के खर्चों के इर्द गिर्द ही घूमता है, और अगर वो इस तरह की उम्मीद करता है तो कुछ गलत नहीं है। अगर सरकार ये कहती कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करके शहरों को बेहतर बनाकर भी मिडिल क्लास को ही राहत पहुंचाई है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत न्याय संगत नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि मिडिल क्लास, हम लोग जब भी नौकरी में बैठते हैं ना, तो जब हमारे पास नए उम्मीदवार भी आते हैं ना सुमित, वो ये कहते हैं कि भाई हमारे को हाथ में इतना पैसा आता है, वो तो सीटीसी यानी जो कुल तनख्वाह होती है जिसमें कंपनी का भी निवेश होता है उसकी बात ही नहीं करते हैं। तो उनकी मानसिकता को भी समझना पड़ेगा, और मुझे लगता है सरकार समझती है, सारी सरकारें समझती हैं। इसके पहले की सरकारों में ये रवायत रही है कि मध्यम वर्ग, जो कि प्रत्यक्ष कर में भी सबसे बड़ा योगदान करता है और अप्रत्यक्ष कर में भी सबसे बड़ा योगदान करता है, उसको बड़ी छूट दी जाएगी, उसको राहत दी जाएगी, उस उम्मीद के साथ वो बना रहता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि मैं इतनी मेहनत से जो पैसा कमाता हूँ उसमें टैक्स कटना चाहिए, देश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में उसका योगदान होना चाहिए। लेकिन उसको लगता है ये कुछ ज़्यादा है, जिस तरीके से खर्चे बढ़े हैं उस हिसाब से उसको बचत नहीं हो पा रही है, उसकी छूट नहीं बढ़ी है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, मेडिकल का एग्जामिशन, स्टैंडर्ड एग्जामिशन बहुत समय से 15,000 रुपये का बना हुआ है। वो उस जमाने से जब डॉक्टरों की फीस 100 रुपये 200 रुपये हुआ करती थी, आज डॉक्टरों की फीस 1000 और 1500 रुपये, वही मध्यम वर्ग वही फीस बढ़ाकर ज़्यादा दे रहा है। ये बात ठीक है कि कुछ मध्यम वर्ग के लोगों की तनख्वाह में भी इजाफा हुआ है, लेकिन आप उसका अगर देखें, प्रोपोर्शनेट इनकम उसकी जितनी बढ़ी है उस हिसाब के मुकाबले खर्चे कई गुना ज़्यादा बढ़े हैं। आज आप एक सिटी स्कैन MRI कराते तो 5-7 हज़ार रुपये उस जेब से निकल जाते हैं, तो साल भर के 15,000 रुपये का न्याय संगत प्रतीत नहीं होता। सब्जी भाजी के दाम बने, अनाज तिल, हम बातें करते हैं सारी चीज़ों, पेट्रोल के दाम बढ़े, डीजल के दाम बढ़े, पेट्रोल डीजल के दाम मार्केट प्राइस के हिसाब से आपने बढ़ा दिए, लेकिन जब वैश्विक स्तर पर उनमें कमी आई तो आपने नहीं बढ़ाए, नहीं घटाए। इसका मतलब आपका मुनाफा बढ़ गया। ठीक है, आप मुनाफा राष्ट्र निर्माण में लगा रहे हैं भाई, तो जो मध्यम वर्ग है उसको तो राहत दे दीजिए, उसको कहीं ना कहीं तो थोड़ी राहत लगे। और देखिए, जो खास तौर पे ये मध्यम वर्ग एक बड़ी महामारी से निकला है, कोरोना जैसी, जिसमें पूरे देश ने लड़ाई लड़ी, मध्यम वर्ग ने तो बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। उसके अपने खोए हैं, उनके इलाज में उसने जेब से ज़बरदस्त पैसा खर्च किया है। शुरू में कोरोना के लिए इंश्योरेंस कवर जो था वो भी नहीं मिल रहा था, बाद में जब गाइडलाइन स्ट्रिक्ट की गई तब मिली। ऐसी एक संकट से निकलने वाला मध्यम वर्ग अब वापस से अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, तो वो राहत की उम्मीद करता है तो गलत नहीं है। जो किसानों के लिए आपने बात की 6,000 से बढ़कर कितना होगा ये हम देखना चाहेंगे, लेकिन किसानों के लिए भी कुछ भी बढ़ेगा तो दरअसल वो जो टैक्स देने वाले लोग हैं, आयकर देने वाले लोग हैं, उनकी जेब से ही जाएगा। तो उनकी जेब से जब जाएगा तो उसमें फिर छूट मिलने की संभावना और भी कम हो जाएगी। तो अब तो खैर हाथ कंगन को आरसी क्या, अभी थोड़ी देर में हमको पता ही लग जाएगा। अभी हम सारी बातें आकलन, इच्छाओं और आकांक्षाओं के आधार पे कर रहे हैं। आकांक्षाओं को हमने अपने अमर उजाला के नेटवर्क के माध्यम से भी नोट किया। सुमित जी, हमने मध्यम वर्ग से जितनी भी बातें की हैं, अमर उजाला के पूरे अखबार के नेटवर्क ने, रिपोर्टरों ने, हमारी वीडियो टीम के लोगों ने, मध्यम वर्ग की इस बार के बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि कुछ ना कुछ उनको राहत मिलेगी टैक्स में। अब कुछ मिनटों की देर है, हमें पता लग जाएगा। निर्मला सीतारमन जी के जो लैपटॉप वाला बैग है, जो उन्होंने खुद सिया है अपनी
माता जी के दिए हुए कपड़े से, और उन्होंने एक परिवर्तन लाया है, सूटकेस से वो इस पर आ गई हैं, बही खाते वाले, और बही खाते से आगे अब आईपैड वाले बजट पर। तो इस बजट में हम लोगों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, सबके लिए क्या है, ये कुछ ही मिनटों की देरी के बाद हमें पता लग जाएगा। इंपॉर्टेंट हेल्थ सेक्टर को छुआ था अपने इस पूरे कमेंट के दौरान। शुभ जी, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ। बीते 2-2.5 साल के बाद, जब से कोरोना के बाद, ये पहला हम मान सकते हैं कि अर्थव्यवस्था पटरी पर है। IMF भी हमारी ग्रोथ को अच्छा बता रहा है, अनुमानित ग्रोथ अच्छा कर रहा है। अमेरिका और चीन के मुकाबले हिंदुस्तान की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी बताई गई है इस साल के लिए भी, और अगले साल का भी जो अनुमान आया, जो प्रेडिक्शन आया है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इन सब के बीच में हेल्थ सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, और हमने देखा था कोरोना में जो कुछ हुआ, जिस तरह की मुसीबत हम सब ने झेली, हम सब की अपनी अपनी दुख दर्द की कहानियाँ हैं उस 1.5-2 साल के अंदर। आज की तारीख में अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस कराने जाओ तो जो इंश्योरेंस 2 साल पहले 20,000 रुपये प्रीमियम पड़ता था, वो 30,000 रुपये हो गया है। करीब 35% का बढ़ोतरी हो चुकी है साधारण से इंश्योरेंस में। क्या उम्मीद करनी चाहिए आज के बजट में, क्योंकि हेल्थ सेक्टर पर सरकार जोर दे रही है, इस पर आम व्यक्ति को राहत पहुंचाए? बिल्कुल सुमित जी, आपने सही कहा कि कोरोना के बाद से जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उन्होंने अपने जो प्रीमियम की रेट है बहुत तेज़ी से बढ़ाई है। तो ऐसी सिचुएशन पे जो आम वर्ग है, उसके ऊपर प्रीमियम का बर्डन बहुत ज़्यादा हुआ है। तो लोगों को उम्मीद है कि सरकार ये बेनिफिट ज़रूर दे कि कम से कम अगर हेल्थ का प्रीमियम बढ़ रहा है तो उसमें जो इनकम टैक्स के थ्रू डिडक्शन मिल सकता है, उसका अगर एरिया बढ़ा दिया जाएगा, डिडक्शन की सीमा बढ़ा दी जाएगी, तो लोगों को उस प्रीमियम में कुछ राहत मिल जाएगी। तो हम सरकार से ये उम्मीद कर रहे हैं कि 2 तरीके से इसमें वो हो सकता है कि जो अचानक से कोविड के बाद से हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम जो कंपनियों ने बढ़ाया है, उस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, उनको भी रेगुलेट करना चाहिए। और सेकेंडरी जो टैक्स में डिडक्शन की सीमा बढ़ा के गवर्नमेंट उसको 2 तरीके से बेनिफिट दे सकती है, क्योंकि अब ज़्यादातर लोग जो है इंश्योरेंस कराने लगे हैं कोरोना के बाद से। तो ऐसी सिचुएशन पर सरकार को उसका दायरा ज़रूर बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, सरकार के पास आमदनी का बहुत बड़ा जरिया भी है। वो जैसे प्रीमियम मिलता है तो कंपनीज के पास जाता है, कंपनी सरकार को टैक्स देती हैं, तो उसका फ़ायदा सरकार को भी है। लेकिन उसके लिए फ़ायदेमंद तब होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके दायरे में लाया जा सके, और तभी हो सकता है जब ये प्रीमियम जो किस्त है ये सबके लिए अफोर्डेबल हो। जयदीप, मैं आपसे एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ पूछना चाहता हूँ। शुभ जी से बात करते करते मैं ट्वीट्स देख रहा था कुछ लोगों के। एक इंटरेस्टिंग ट्वीट दिखाई दिया मुझे। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम साहब के सुपुत्र हैं कार्ति चिदम्बरम, जो अलग अलग वजहों से खबरों में रहते हैं, कभी किसी कंट्रोवर्सी की वजह से, कभी किसी घोटाले की वजह से। लेकिन आज उनका ट्वीट मुझे लगा कि ज़रूर यहाँ बताना चाहिए, दर्शकों के लिए भी शायद इंटरेस्टिंग होगा, और उस पर जयदीप मैं आपका कमेंट चाहूँगा। कार्ति चिदम्बरम अपने ट्वीट में ये कहते हैं कि ये जो एक्सरसाइज होती है ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है, ये भाषण देने का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। हमको अपने बजट को ऐसा बना देना चाहिए कि इसके लिए कोई भाषण देने की ज़रूरत नहीं है। आप जो स्कीम्स लाने वाले हैं, जो पॉलिसी चेंजेस करने वाले हैं, वो इंटरनेट पे डालिए, ऑनलाइन करिए, पब्लिक पढ़ लेगी। इस तरह के तमाशे की ज़रूरत क्या है, क्योंकि ये तो महज एक प्रशासनिक कार्यप्रणाली है। जयदीप, आप क्या चाहेंगे, क्या सरकारें इस सुझाव को या इस टॉन्ट को मानेंगी आने वाले वक्त में? बहुत दिलचस्प है सुमित जी, ये जो आप कह रहे हैं, ट्वीट किया जो है कार्ति चिदम्बरम जी ने, और उनकी तरफ से ये आना इसलिए महत्वपूर्ण है कि उनके पिता उस सरकार के प्रतिनिधि रहे और अभी भी लगातार वर्तमान सरकार के खिलाफ मुखरता से बोलते हैं आर्थिक नीतियों को लेकर, और उन्होंने बहुत लंबे समय तक इस कार्यभार को खुद संभाला है। तो राजनीतिक दृष्टि से पहले मैं इस टिप्पणी से शुरुआत करना चाहूँगा कि ऐसा करना था तो पता नहीं यूपीए सरकार के समय में इस तमाशे को क्यों जारी रखा गया और इस तमाशे को तब क्यों नहीं खत्म कर दिया गया। उसके आगे बढ़कर मैं उनकी इस पोर्शन से सहमत हूं कि ये एक एकेडमिक एक्सरसाइज होती है, और इस एकेडमिक एक्सरसाइज का लेकिन आम जीवन से, लोगों की ज़िंदगी से सीधा संबंध है। इसलिए जिन लोगों के लिए ये बजट बन रहा है, जिन लोगों के पैसे से ये बजट बन रहा है, जिन लोगों की उम्मीदें इस बजट पर टिकी होती है, उन तक इसकी जानकारी पहुंचना जरूरी है। वो किस तरीके से पहुंचे ये महत्वपूर्ण है। मैं इसमें 2-3 बातों का क्रेडिट इस सरकार को देना चाहूंगा कि पहले ये बजट शाम को पेश हुआ करता था, और वो माना यह गया था कि ब्रिटिश संसद के समय के हिसाब से, क्योंकि ब्रिटेन में जब सुबह होती है तब हमारे यहाँ पर 4-5 बजती, और तब शाम को बजट आता था, और हम पत्रकार लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार करते थे। और अखबार वाले पत्रकारों के लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि अखबार छपने के समय में और बजट प्रस्तुति के समय में बहुत कम समय रह जाता था, और बहुत तेजी से उस बजट को पूरा समग्र रूप में अखबार में प्रस्तुत करना होता था। उसको बदलकर सुबह 11 बजे का समय कर दिया गया है।
सूटकेस में आता था, बड़े बड़े कागज़ होते थे, उससे पेपरलेस पर चले गए हैं, आईपैड पर आ गए हैं। और आज ही सुबह भी इस बात का जिक्र वित्त राज्य मंत्री ने किया है कि पूरा का पूरा बजट डिजिटल ही रहेगा और वेबसाइट्स पर उपलब्ध रहेगा। तो जो कार्ति चिदम्बरम जी कह रहे हैं उस दिशा में कुछ कदम बढ़ाए जा चुके हैं। रेल बजट पहले से हम सबको मालूम है कि पहले प्रस्तुत होता था और उसके बाद आम बजट आता था। रेल बजट और आम बजट अलग अलग हुआ करते थे। अब रेल बजट को भी इसका हिस्सा बना दिया गया और कुछ तो ऐसी बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइजेज जो कि केवल औपचारिकता भर होती थी उसको वैसे ही खत्म कर दिया गया है। मुझे लगता है कि जो बहुत आवश्यक है संसदीय कार्रवाई के हिसाब से उसको तो रखा जाना चाहिए, लेकिन इसमें से कुछ और चीज़ें, वैसे भी जो बजट भाषण होता है उसमें सब कुछ नहीं होता। बजट अपने आप में बहुत बड़ा दस्तावेज है, उसकी कई बारीकियां होती हैं। इसलिए शुभ जी जैसे लोग और भी जो वित्तीय विशेषज्ञ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमर उजाला के दफ्तर में, या तमाम न्यूज़ रूम्स जो इसको कवर कर रही हैं, वो इसीलिए मौजूद हैं क्योंकि इसकी पेचीदगियाँ बहुत सारी होती हैं और उन सबको हम आम फहम भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। यही पत्रकारिता है, यही मास कम्युनिकेशन भी है। तो मुझे लगता है कार्ति चिदम्बरम जी का ये ट्वीट बहुत दिलचस्प है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इसके पहले की सरकारों ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया, और इस सरकार को इस बात का क्रेडिट ज़रूर देंगे कि कुछ औपचारिकताओं को खत्म करने की कोशिश इस सरकार ने की है, चाहे मास पॉपुलैरिटी के लिए चाहिए सही, चाहे प्रतीक गढ़ने के लिए सही, चाहे अपनी इमेज बनाने के लिए सही, लेकिन जो किया गया उसका क्रेडिट देना पड़ेगा। लेकिन खुद एक व्यक्ति जो इस तरह की आर्थिक चीज़ों में लगातार चर्चा में रहा है, वो व्यक्ति ऐसी बातें कहता है, तो मुझे लगता है कि उसके सुझाव पर ध्यान भी, चाहे वो ताना हो चाहे वो तंज हो, अगर इसमें और भी औपचारिकताएं शेष हैं जिनको खत्म करके इसको और आसान बनाया जा सकता है तो बनाया जाना चाहिए, क्यों नहीं। जैसे कहा कि एक और एक्सपर्ट यहाँ जुड़ गए हैं, वित्तीय जानकार सीए हैं रविंद्र सिंह जी, मैं उनके पास आना चाहूँगा। रविंद्र जी, अब कुछ ही मिनट बाकी हैं जब निर्मला सीतारमन अपना टैबलेट ऑन कर देंगी, अपने टैबलेट को पढ़ना शुरू कर देंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दो बड़ी चीज़ें जो आप अपेक्षा रख रहे हैं इस बजट से, आपको क्या लगता है क्या आज होने वाला है इस चुनावी बजट में? देखिए, मेरा मानना है कि आज दो बड़ी चीज़ों की अगर हम उसको सेग्रीगेट करें तो पहला है लोगों की कंजम्पशन पावर को बढ़ाया जाए। उसके लिए मैक्सिमम रेट पे आपका जो ये एग्जम्पशन लिमिट है इसको कम बढ़ाना चाहिए, 2.5 लाख से बढ़ा के कम इसको 5 लाख करना चाहिए। और इसके अलावा कई सारी छूट जैसे कि इंटरेस्ट ऑन होम लोन है, इस पर भी आपको मेरे को दिखना चाहिए कि आगे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट जो है हमारे आम नागरिक को मिले ताकि उनकी कंजम्पशन पावर बढ़े और कहीं ना कहीं जो उसके एक्सपेंडिचर हैं उसको यूटिलाइजेशन, उसके इनकम टैक्स की जब कैलकुलेशन करते टाइम उसका बेनिफिट मिले। इस तरह का कुछ प्रावधान लाने की ज़रूरत हो तो उससे क्या होगा कि कंजम्पशन पावर हमारी बढ़ेगी, पहला। दूसरा है हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसको प्रमोट करना, इसको आगे लेके जाना। उसके लिए जो बेस्ट पॉसिबल उसमें हमारे स्कीम्स हो सकती हैं उसको लेके आना। इस तरह का अगर कुछ प्रावधान होता है तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत बूस्ट मिलता है, और जो ये बूस्ट मिलेगा इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं मार्केट में कई तरह के रोज़गार एवेन्यू क्रिएट होते हैं, कई तरह की इसमें जो ग्रोथ आस्पेक्ट क्रिएट होते हैं। तो मैं मानता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज लोगों की कंजम्पशन पावर, इन दोनों चीज़ों पे ध्यान। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हो। ये बात हम लोग लगातार चर्चा भी कर रहे हैं कि जब तक लोगों की जेब में पैसा नहीं होगा तो खर्चा कहाँ से करेंगे, और पैसा लोगों की जेब तक पहुँचे, उनकी तिजोरी पहुँचे, उनके वॉलेट में पहुँचे, उनकी पॉकेट में पहुँचे, वो तभी हो सकता है जब सरकार ऐसी स्कीम्स को लेकर आए जिससे आम आदमी अपने पैसे को खर्च करने की इच्छा रखे। पहले तो पैसा बचाए और फिर पैसे को खर्चा करे, तभी इकोनॉमी का पहिया जो है वो तेजी से भाग सकता है। शुभ जी, एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, बीते दिनों में हमने ये देखा है कोविड के दौरान से लेकर अब तक बीते 2-2.5-3 सालों में बहुत मास लेवल पे माइग्रेशन हुआ था, बहुत बड़ी संख्या में पॉपुलेशन शहरों से ग्रामीण इलाकों में चली गई है। इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि टाइप बी और टाइप सी सिटीज़ में बहुत ज़्यादा लोगों के मन में इच्छाएं हैं कि हम वहीं रह जाएं, वहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाएं। तो ये जो अर्बन रूरल डिवाइड है, उस डिवाइड को ख़त्म करने के लिए क्या चीज़ करनी चाहिए निर्मला सीतारमन को, ताकि ग्रामीण परिवेश में रहने वाला व्यक्ति भी ग्रामीण इलाके में रहकर भी अपने लिए, अपने परिवार का पेट को भर सके? जी सुमित जी, इसमें आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में क्या है कि ज़्यादातर रोज़गार के ऑप्शन सिर्फ शहरों में मौजूद हैं, और ऐसे ही सिचुएशन में लोग रोज़गार की तलाश में गांव से और छोटे शहरों से दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर ऐसे शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं। तो उनको ये है कि सरकार हमारे यहाँ पे ऐसे रोज़गार के अवसर नहीं दे रही है, जिसकी वजह से हमें बाहर जाना पड़ता है। लेकिन जब कोविड के दौरान लोग वापस अपने घरों की ओर चले गए तो ऐसी सिचुएशन में ये वाला मुद्दा और अहम हो गया।
तो सरकार को उनके ही क्षेत्र में जो बेसिक रोजगार हैं वो वाला इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी ढांचा वहीं पे प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, और ऐसी रिलीफ देने की ज़रूरत है कि लोग जो है उस स्ट्रक्चर का पार्ट बन के अपने छोटे छोटे बिजनेस और बुनियादी काम वहीं पे सरकार अगर स्टार्ट करा पाएगी तो लोग जो है छोटे शहरों से बड़े शहरों की ओर शिफ्ट होना कम हो जाएंगे, और इस तरीके से ओवरऑल ग्रोथ शुरू हो जाएगी। अगर एग्रीकल्चरल है तो उसको वहाँ पे प्रमोट करना चाहिए, अगर कोई विशेष इंडस्ट्री है वहाँ पे तो उसको सरकार को प्रमोट करना चाहिए, और सरकार बड़े बड़े जो बिजनेस को डिजिटल से जोड़ रही है, छोटे बिजनेस को भी डिजिटल का सपोर्ट अगर मिलेगा तो वो लोगों को भी बड़ी अच्छी होगी और खुशी की उम्मीद जगेगी। तारीफ भी करनी, सरकार ने जो डिजिटल करने का प्रोसेस शुरू किया था 3 साल पहले, उसको बहुत बड़ी संख्या में सफलता मिली है। आज मॉल के अंदर चले जाइए तो आप डिजिटल पे पेमेंट कर सकते हैं, आप रेडी पट्टी पे चाय पी रहे हैं तो वहाँ भी आप पेटीएम कर सकते हैं, वहाँ भी आप भीम ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप गाँव में चले जाएँ तो वहाँ भी बहुत बड़ी संख्या में लोग बाग, क्योंकि सबके पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है, नॉर्मल फ़ोन के जरिए भी आप इन ऐप्स पे पेमेंट कर सकते हैं। डिजिटल का फ़ायदा सरकार को मिला, अर्थव्यवस्था भी उससे लॉन्ग टर्म में मजबूत होती है। रविंद्र जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा आपसे, रोज़गार या नौकरी सबसे बड़ी चुनौती है सरकार की। बीते 40-45 सालों में सबसे ख़राब स्थिति में है भारत की रोज़गार की दर इस वक्त, क्योंकि कोविड की वजह से नौकरियां गई और नौकरियां जो मिल रही हैं तो उतनी तेज़ी से नहीं मिल पा रही हैं। ज़्यादातर व्यक्ति अब स्टार्टअप में या अपना खुद का काम करना चाहता है, तो रोज़गार के अवसर पैदा हो, क्या सरकार को उसके लिए करना चाहिए? रविंद्र जी। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें स्टार्टअप भी एक वन ऑफ द ऑप्शन है कि आप अपने लेवल पे कुछ काम कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब सिर्फ कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर करना नहीं, बट कुछ सर्विस भी इस तरह की क्रिएट करना जो कि कहीं ना कहीं, आज हम जीएसटी की बात करते हैं, दोनों को साथ लेके चलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज में जब हमारा क्रिएशन बढ़ेगा, हमारा डेवलपमेंट होगा और हमारी ग्रोथ बढ़ेगी, तो वहाँ से जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी क्रिएट होती है। जॉब अपॉर्चुनिटीज दोनों साइमल्टेनियसली काम करती हैं, वाइज जा सकते हैं आप मैन्युफैक्चरिंग का और जो सर्विस इंडस्ट्री का उसका ग्रोथ होने से। तो इन सब पे ध्यान देने के लिए गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट होना चाहिए कि हर एंगल से देखे अपने राष्ट्र में, अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें, सेमी अर्बन एरियाज़ की बात करें या फिर प्योर अर्बन एरियाज़ की बात करें, उन सभी जगह रिक्वायरमेंट है नई नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की और नए टैलेंट को सामने लाने की, उसको सपोर्ट, प्रमोट एंड अल्टीमेटली उसको प्रोग्रेस करने के लिए जो सपोर्ट होती है गवर्नमेंट की वो हर तरह से मिलनी चाहिए। आज ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, बट जब बिजनेस करने बैठते हैं तो लगता है कि नहीं, इतना भी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो ये गैप्स आ रहे हैं, इन सब गैप्स को फिलअप करने की ज़रूरत है, इनको कंप्लीट करने की ज़रूरत है। और जो हमारा ये क्रिएशन का जो एक हमारा एक जो एस्पेक्ट निकल के आता है कि नई न्यू आइटम्स को क्रिएट करना, नए नए इन्वेंशंस पे काम करना, नए नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेके आना, जो लोगों की नीड्स को आज की डेट में कई तरह से चेंज कर रहे हैं। डिजिटलाइजेशन जो है वो ओवरऑल सपोर्ट कर ही रहा है और उसके साथ साथ उसको भी प्रमोट करने की ज़रूरत है। डिजिटल इंडस्ट्री से लेके कई सारे नए एस्पेक्ट आज की डेट में मार्केट में आ गए हैं। तो ये सभी को अगर कलेक्टिवली देखें तो कहीं ना कहीं अगर इस पर सरकार ध्यान दे, कुछ हद तक सब सेक्टर को प्रमोट करती रहे, मजबूत करती रहे, तो हमारा लगता है बेरोजगार जो समस्या है कुछ ही सेकंड का वक्त रह गया है 11 बजने में, और कुछ ही सेकंड के बाद निर्मला सीतारमण अपना 5वां बजट लगातार पेश करने वाली हैं। अमरउजाला.com पर आप ये लाइव टेलीकास्ट पूरा देख पा रहे हैं। तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। बजट से क्या उम्मीदें हैं, ये हम लगातार बीते 2 दिनों से बातचीत कर रहे हैं। बजट के बाद, क्योंकि बजट पेश होगा, अमूमन निर्मला सीतारमण ने जब बजट पेश किया है वो 80, 85, 90 मिनट तक बोली हैं, तो ये मान के चलना चाहिए करीब सवा घंटे, 1.5 घंटे आज भी उनका भाषण होगा। और उसके बाद सबसे पहले सबसे सटीक विश्लेषण अगर आप देखेंगे तो यहाँ अमरउजाला.com पर हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट भी रहेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी रहेंगे, लेकिन ज़्यादातर हमने इंतज़ाम किया है अर्थ विशेषज्ञों का, जो अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जो समझा पाएंगे इस बजट से हमको क्या मिला या क्या नहीं मिला। इन तमाम चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अमरउजाला.com के साथ बने रहना है। जिसी वक्त सीधा लाइव टेलीकास्ट हम आपको दिखाएंगे। निर्मला सीतारमण किसी भी वक्त पहुंच सकती हैं। क्या क्या आर्थिक सर्वे की बड़ी बातें आपके सामने है, निर्मला सीतारमण का हम इंतजार कर रहे हैं। जैसे निर्मला सीतारमण स्क्रीन पर दिखाई देंगी, संसद में, लोकसभा में खड़ी होंगी, अपना टैबलेट ऑन करेंगी और ये लाइव कवरेज सीधे स्विच हो जाएगा लोकसभा संसद भवन की ओर, जहां पर निर्मला सीतारमण के इस बजट का हमको देखना है, क्योंकि न सिर्फ निर्मला सीतारमण का ये बजट है बल्कि मोदी सरकार, मोदी 2.0 के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है। चुनाव की आहट है, आइए देखते हैं।
This is the first budget in Amrit Kal. This budget hopes to build on the foundation laid in the previous budget and the blueprint drawn for India at 100. We envision a prosperous and inclusive India in which the fruits of development will reach all sections and citizens, especially our youth, women, farmers, OBCs, scheduled castes, and scheduled tribes. In the 75th year of our independence, the world has recognized the Indian economy as a bright star. Our current year's economic growth is estimated to be at 7%. It is notable that this is the highest among all the major economies. This is in spite of the massive slowdown globally caused by COVID-19 and the war. The Indian economy is therefore on the right track, and despite a time of challenges, heading towards a bright future. Today, as Indians stand with their head held high and the world appreciates India's achievements and successes, we are sure that elders who had fought for India's independence will, with joy, bless us in our endeavors going forward as well. Our focus on wide-ranging reforms and sound policies implemented through Sabka Prayas, resulting in Jan Bhagidari and targeted support to those in need, helped us perform well in trying times. India's rising global profile is because of the several accomplishments: unique world-class digital public infrastructure, example, Aadhaar, CoWIN, and UPI, COVID vaccination drive in unparalleled scale and speed, proactive role in frontier areas such as achieving the climate-related goals, Mission Life, and National Hydrogen Mission. During the COVID-19 pandemic, we ensured that no one goes to bed hungry with a scheme to supply free food grains to over 80 crore persons for 28 months. Continuing our commitment to ensure food and nutritional security, we are implementing from 1st January 2023 a scheme to supply free food grain to all Antyodaya and priority households for the next 1 year. Under PM Garib Kalyan Anna Yojana, the entire expenditure of about 2 lakh crore will be borne by the central government. In these times of global challenges, the G20 presidency gives us a unique opportunity to strengthen India's role in the world economic order. With the theme of Vasudhaiva Kutumbakam, we are steering an ambitious, people-centric agenda to address global challenges and to facilitate sustainable economic development. The government's efforts since 2014 have ensured for all citizens a better quality of life and life of dignity. The per capita income has more than doubled to 1.97 lakh rupees. In these 9 years, the Indian economy has increased in size from being 10th to 5th largest in the world. We have significantly improved our position as well as a well-governed and innovative country with a conducive environment for business as reflected in several global indices. We have made a significant progress in many sustainable development goals. The economy has become a lot more formalized
as reflected in the EPFO membership, more than doubling to 27 crore, and rupees 7,400 crore digital payments of 126 lakh crore rupees through UPI in 2022. The efficient implementation of many schemes with universalization of targeted benefits has resulted in inclusive development. Some of the schemes are 11.7 crore household toilets under Swachh Bharat mission, which is achieved, 9.6 crore LPG connections under Ujala, 220 crore COVID vaccination of 102 crore persons, 47.8 crore PM Jan Dhan bank accounts, insurance cover for 44.6 crore persons under PM Suraksha Bima and PM Jeevan Jyoti Yojana, and cash transfer of 2.2 lakh crores of rupees to 11.4 crore to over 11.4 crore farmers under PM Kisan Samman Nidhi. Our vision for the Amrit Kal includes technology-driven and knowledge-based economy with strong public finances and a robust financial sector. To achieve this, Jan Bhagidari through Sabka Saath, Sabka Prayas is essential. The economic agenda for achieving this vision focuses on three things. First, facilitating ample opportunities for citizens, especially the youth, to fulfill their aspirations. Second, providing strong impetus to growth and job creation. And third, strengthening macroeconomic stability. To service these focus areas in our journey to India at 100, we believe that the following 4 opportunities can be transformative during Amrit Kal. Economic empowerment of women. Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission has achieved remarkable success by mobilizing rural women into 81 lakh self-help groups. We will enable these groups to reach the next stage of economic empowerment through formation of large producer enterprises or collectives, with each having several thousand members and managed professionally. They will be helped with raw materials supply and for better design, quality, branding, and marketing of their products. Through supporting these policies, they will be enabled to scale up their operations to serve the large consumer markets, as has been the case with the several startups growing into unicorns. PM Vishwakarma Kaushal Samman, PM Vikas. For centuries, traditional artisans and craftspeople who work with their hands using tools have brought renown for India. They're generally referred to as Vishwakarma. The art and the handicraft created by them represents the true spirit of Atmanirbhar Bharat. For the first time, a package of assistance for them has been conceptualized. The new scheme will enable them to improve the quality, scale, and reach of their products, integrating them with the MSME value chain. The components of this scheme will include not only financial support, but also access to advanced skill training, knowledge of modern digital techniques, and efficient green technologies, brand promotion, linkage with local and global markets, digital payments, and social security. This will greatly benefit the scheduled castes, scheduled tribes, OBCs, women, and people belonging to the weaker sections.
tourism, the country offers immense attraction for domestic as well as foreign tourists. There is a large potential to be tapped in tourism. The sector holds huge opportunities for jobs and entrepreneurship for youth in particular. Promotion of tourism will be taken up on mission mode with active participation of states, convergence of government programs, and public-private partnerships. Green growth. We are implementing many programs for green fuel, green energy, green farming, green mobility, green buildings, and green equipment, and policies for efficient use of energy across various economic गांव में मेरे चाचा जी गुजर गए, लेकिन large-scale green job opportunities. Priorities of this budget. The budget adopts the following 7 priorities. They complement each other and act as the Saptarishi guiding us through the Amritkal. Inclusive development, reaching the last mile, infrastructure and investment, unleashing the potential, green growth, youth power, and financial sector. I now speak on the priority number 1, inclusive development. The government's philosophy of Sabka Saath, Sabka Vikas, development covering in specific farmers, women, youth, OBCs, scheduled castes, scheduled tribes, Divyangjan, and economically weaker sections, and overall priority for the underprivileged, Vanchiton ko Variyata. There has also been a sustained focus on Jammu Kashmir, Ladakh, and the Northeast. This budget builds on those efforts. Digital public infrastructure for agriculture. Digital public infrastructure for agriculture will be built as an open source, open standard, and interoperable public good. This will enable inclusive farmer-centric solutions through relevant information services for crop planning, access to farm inputs, credit and insurance, help for crop estimation, market intelligence, and support for growth of agri-tech industry and startups. An agriculture accelerator fund. An agriculture accelerator fund will be set up to encourage agri-startups by young entrepreneurs in rural areas. The fund will aim at bringing innovative and affordable solutions for challenges faced by farmers. It will also bring in modern technologies to transform agricultural practices, increase productivity and profitability. To enhance the productivity of extra long staple cotton, we will adopt a cluster-based and value chain approach through public-private partnerships. This will mean collaboration between farmers, state, and industry for input supplies, extension services, and market linkages. We will launch an Atmanirbhar Clean Plant program to boost availability of disease-free, quality planting material for high-value horticultural crops at an outlay of 2,200 crores. Global hub for millets, which are Sri Anna. India is the forefront. India's at the forefront of popularizing millets, whose consumption furthers nutrition, food security, and welfare of farmers, said the Honorable Prime Minister.
We are the largest producer and second largest exporter of Sri Anna in the world. We grow several types of Sri Anna, such as Sri Anna Jowar, Sri Anna Ragi, Sri Anna Bajra, Sri Anna Kutu, Ramdana, Kangni, Kutni, Kutki, Kodo, China, and Sama. These have a number of health benefits and have been an integral part of our food for centuries. I acknowledge with pride the huge service done by small farmers in contributing to the health of fellow citizens by growing these Sri Anna. Now, to make India a global hub for Sri Anna, the Indian Institute of Millet Research, ideally Indian Institute of the Sri Anna Research, Hyderabad, will be supported as the center of excellence for sharing best practices, research and technologies at the international level. The agricultural credit target will be increased to 20 lakh crores with focus on animal husbandry, dairy and fisheries. We will launch a new sub-scheme of PM Matsya Sampada Yojana, which is an existing scheme, but we launch a new sub-scheme with targeted investment of 6,000 crores to further enable activities of fishermen, fish vendors and micro and small entrepreneurs, improve value chain efficiencies and expand the market. For farmers, especially small and marginal farmers and other marginalized sections, the government is promoting cooperative-based economic development model. A new Ministry of Cooperation was formed with a mandate to realize the vision of Sahkar se Samriddhi. To realize this vision, the government has already initiated computerization of 63,000 primary agricultural credit societies with an investment of 2,516 crores. In consultation with all the stakeholders and the states, model bylaws for PACS were formulated, enabling them to become multi-purpose PACS. A national cooperative database is being prepared for countrywide mapping of cooperative societies. With this backdrop, we will implement a plan to set up massive decentralized storage capacity. This will help farmers store their produce and realize remunerative prices through sale at appropriate times. The government will also facilitate setting up of a large number of multi-purpose cooperative societies, primary fisheries societies, and dairy cooperative societies in uncovered panchayat and villages in the next 5 years. Health, education and skilling. 157 new nursing colleges will be established in co-location with the existing 157 medical colleges established since 2014. A mission to eliminate sickle cell anemia by 2047 will be launched. It will entail awareness creation, universal screening of 7 crore people in the age group of 0 to 40 years in affected tribal areas, and counseling through collaborative efforts of central ministries and state governments. Facilities in select ICMR labs, Indian Council for Medical Research labs,
will be made available for research by public and private medical college faculty and private sector R&D teams for encouraging collaborative research and innovation. A new program to promote research and innovation in pharmaceuticals will be taken up through centers of excellence. We shall also encourage industry to invest in research and development in specific priority areas. Dedicated multidisciplinary courses for medical devices will be supported in existing institutions to ensure availability of skilled manpower for futuristic medical technologies, high-end manufacturing and research. Teachers training. Teachers training will be re-envisioned through innovative pedagogy, curriculum transaction, continuous professional development, dipstick surveys, and ICT implementation. The District Institute of Education and Training will be developed as vibrant institutes of excellence for this purpose. National Digital Library for Children and Adolescents. A National Digital Library for Children and Adolescents will be set up for facilitating availability of quality books across geographies, languages, genres, and levels, and device-agnostic accessibility. States will be encouraged to set up physical libraries for them at panchayat and ward levels and provide infrastructure for accessing the National Digital Library resources. Additionally, to build a culture of reading and to make up for pandemic time learning loss, the National Book Trust, the Children's Book Trust, and other sources will be encouraged to provide and replenish non-curricular titles in regional languages and in English to these physical libraries. Collaboration with NGOs that work in literacy will also be a part of this initiative to inculcate financial literacy. Financial sector regulators and organizations will be encouraged to provide age-appropriate reading material to these libraries. I move to priority 2, reaching the last mile. Prime Minister Vajpayee's government had formed the Ministry of Tribal Affairs and the Department of Development of Northeast Region to provide a sharper focus to the objective of reaching the last mile. Our government has formed the Ministries of Ayush, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Skill Development, Jal Shakti and Cooperation. Building on the success of the Aspirational Districts program, the government has recently launched the Aspirational Blocks program, covering 500 blocks for saturation of essential government services across multiple domains such as health, nutrition, education, agriculture, water resources, financial inclusion, skill development, and basic infrastructure. Manya Speaker, Sir, Pradhan Mantri PBTG, which is Primitive Vulnerable Tribal Groups Development Mission, is being launched. To improve socio-economic conditions of the particularly vulnerable tribal groups, the PVTGs as we refer them to, Pradhan Mantri PVTG Development Mission will be launched. This will saturate PVTG families and habitations with basic facilities such as safe housing, clean drinking water and sanitation,
improved access to education, health, nutrition, road and telecom connectivity, and sustainable livelihood opportunities. An amount of 15,000 crores will be made available to implement the mission in the next 3 years under the Development Action Plan for the Scheduled Tribes. Ekalavya Model Residential Schools. In the next 3 years, Center will recruit 38,800 teachers and support staff for the 740 Ekalavya Model Residential Schools, which is serving 3.5 lakh tribal students. In the drought-prone central regions of Karnataka, central assistance of 5,300 crore will be given to Upper Bhadra project to provide sustainable micro irrigation and filling up of surface tanks for drinking water. PM Awas Yojana. The outlay for PM Awas Yojana is being enhanced by 66% to over 79,000 crores. Bharat Shared Repository of Inscriptions will be set up in a digital epigraphy museum with digitization of 1 lakh ancient inscriptions in the first stage. Support for poor prisoners. For poor persons who are in prisons and unable to afford the penalty or the bail amount, required financial support will be provided. Priority number 3, infrastructure and investment. Investments in infrastructure and productive capacity have a large multiplier impact on growth and employment. After the subdued period of the pandemic, private investments are growing again. The budget takes the lead once again to ramp up the virtuous cycle of investment and job creation. Honorable Speaker, sir, the capital investment outlay is being increased steeply for the 3rd year in a row by 33% to 10 lakh crores, which would be would be 3.3% of GDP. This will almost be 3 times the outlay made in 2019-20. This substantial increase in recent years is central to the government's efforts to enhance growth potential and job creation, crowd in private investments, and provide a cushion against global headwinds. The direct capital investment by the center is complemented by the provision made for creation of capital assets through grants and aids to state. The effective capital expenditure of the center is budgeted at 13.7 lakh crore rupees, which will be 4.5% of GDP. Support to state governments for capital investment. I have decided to continue the 50-year interest-free loan to state governments for 1 more year to spur investment in infrastructure and to incentivize them for complementary policies actions with a significantly enhanced outlay of 1.3 lakh crores. The newly established Infrastructure Finance Secretariat will assist all stakeholders for more private investment in infrastructure, including railways,
roads, urban infrastructure and power, which are predominantly depend on public resources. The harmonized master list of infrastructure will be reviewed by an expert committee for recommending the classification and financing framework suitable for Amartkal. A capital outlay, I'm talking about railways now, sir, Honorable Speaker, railways. A capital outlay of 2.40 lakh crores has been provided for the railways. This is the highest ever outlay this highest ever outlay is about 9 times the outlay made in 2013-14. 100 critical transport infrastructure projects for last and first mile connectivity for ports, coal, steel, fertilizer and food grain sectors have been identified. They will be taken up on priority with investment of 75,000 crores, including 15,000 crore from private sources. 50 additional airports, heliports, water aerodromes, and advanced landing grounds will be revived for improving regional air connectivity. Sustainable cities for tomorrow. States and cities will be encouraged to undertake urban planning reforms and actions to transform our cities into sustainable cities of tomorrow. This means efficient use of land resources, adequate resources for urban infrastructure, transit-oriented development, enhanced availability and affordability of urban land and opportunities for all. Through property tax governance reforms and ring-fencing user charges on urban infrastructure, cities will be incentivized to improve their creditworthiness for municipal bonds. Like the RIDF, an urban infrastructure development fund will be established through use of priority sector lending shortfall. This will be managed by the National Housing Bank and will be used by public agencies to create urban infrastructure in Tier 2 and Tier 3 cities. States will be encouraged to leverage resources from the grants of the 15th Finance Commission as well as existing schemes to adopt appropriate user charges while accessing the UIDF. We expect to make available 10,000 crore rupees per annum for this purpose. All cities and towns will be enabled for 100% mechanical desludging of septic tanks and sewers to transition from manhole to machine hole mode. Enhanced focus will be provided for scientific management of dry and wet waste. Honorable Speaker, sir, our Prime Minister had said, good governance is the key to a nation's progress. Our government is committed to providing a transparent and accountable administration which works for the betterment and welfare of common citizens. Mission Karma Yogi. Under Mission Karma Yogi, center, states and the union territories are making and implementing capacity building plans for civil servants. The government has also launched an integrated online training platform, I Got Karma Yogi, to provide continuous learning opportunities for lakhs of government employees to upgrade their skills and facilitate people-centric approach. Sir, for enhancing ease of doing business, more than 39,000 compliance
more than 39,000 compliances have been reduced, and more than 3,400 legal provisions have been decriminalized. For furthering the trust-based governance, we have introduced the Jan Vishwas Bill to amend 42 central acts. This budget proposes a series of measures to unleash the potential of our economy. Centers of Excellence for Artificial Intelligence. For realizing the vision of Make AI in India and Make AI Work for India, 3 centers of excellence for artificial intelligence will be set up in top educational institutions. Leading industry players will partner in conducting interdisciplinary research, develop cutting-edge applications, and scalable problem solutions in the areas of agriculture, health, and sustainable cities. This will galvanize an effective AI ecosystem and nurture quality human resources in the field. National Data Governance Policy. To unleash innovation and research by startups and academia, a national data governance policy will be brought out. This will enable access to anonymized data. The KYC process will be simplified, adopting a risk-based instead of one-size-fits-all approach. The financial sector regulators will also be encouraged to have a KYC system fully amenable to meet the needs of digital India. One-stop solution for identity and address updating. A one-stop solution for reconciliation and updating of identity and address of individuals maintained by various government agencies, regulators, and regulated entities will be established using DigiLocker service and Aadhaar as foundational identity. Speaker, sir, common business identifier. For the business establishments required to have a permanent account number, the PAN will be used as the common identifier for all digital systems of specified government agencies. This will bring ease of doing business, and it will be facilitated through a legal mandate. For obviating the need for separate submission of same information to different government agencies, a system of unified filing process will be set up. Such filing of information or return in simplified forms on a common portal will be shared with other agencies as per the filer's choice. Vivad Se Vishwas 1. Relief for MSMEs. In cases of failure by MSMEs to execute contracts during the COVID period, 95% of the forfeited amount relating to the bid or performance security will be returned to them by government and government undertakings. This will provide relief to the MSMEs. Vivad Se Vishwas 2. Settling contractual disputes. To settle contractual disputes of government and government undertakings wherein arbitral award is under challenge in a court, a voluntary settlement scheme with standardized terms will be introduced. This will be done by offering graded settlement terms depending on pendency level of the dispute. The state support mission of Niti Aayog will be continued for 3 years for our collective efforts towards national priorities. Result-based financing. To better allocate scarce resources
for competing development needs, the financing of select schemes will be changed on a pilot basis from input-based to result-based. E-courts. For efficient administration of justice, Phase 3 of e-courts project will be launched with an outlay of 7,000 crores. Fintech services in India have been facilitated by our digital public infrastructure, including Aadhaar, PM Jan Dhan Yojana, Video, KYC, India Stack, and UPI. To enable more fintech innovative services, the scope of documents available in DigiLocker for individuals will be expanded. An entity, DigiLocker, will be set up for the use by MSMEs, large businesses, and also charitable trusts. This will be towards storing and sharing documents online securely whenever needed with various authorities, regulators, banks, and other business entities. 5G services. 100 labs for developing applications using 5G services will be set up in engineering institutions. To realize a new range of opportunities, business models, and employment potential, the labs will cover, among others, applications such as smart classrooms, precision farming, intelligent transport systems, and healthcare applications. Lab-grown diamonds. Lab-grown diamonds is a technology and innovation-driven emerging sector with high employment potential. These environment-friendly diamonds, which have optically and chemically the same properties as natural diamonds. To encourage indigenous production of LGD, lab-grown diamond seeds and machines, and to reduce import dependency, a research and development grant will be provided to one of the IITs for 5 years. To reduce the cost of production, a proposal to review the custom duty on LGD seeds will be indicated in Part B of the speech. I come to the fifth priority, Honorable Speaker, sir, green growth. Honorable Prime Minister has given a vision for life or lifestyle for environment to spur a movement of environmentally conscious lifestyle. India is moving forward firmly for the Panchamrit, the net zero carbon emission by 2070 to usher in green industrial and economic transition. This budget builds on our focus on green growth. The recently launched National Green Hydrogen Mission, with an outlay of 19,700 crores, will facilitate transition of the economy to low carbon intensity, reduce dependence on fossil fuel imports, and make the country assume technology and market leadership in this sunrise sector. Our target is to reach an annual production of 5 MMT by 2030. Energy transition. This budget provides for 35,000 crores for priority capital investment towards energy transition and net zero objectives and energy security by Ministry of Petroleum and Natural Gas. To steer the economy on sustainable development path, battery energy storage systems with capacity of 4,000 MWH will be supported with viability gap funding. A detailed framework for pumped storage projects will also be formulated. Renewable energy evacuation. The interstate transmission system
for evacuation and grid integration of 13 gigawatt renewable energy from Ladakh will be constructed with investment of 20,700 crore, including central support of 8,300 crores. Green Credit Program. For encouraging behavioral change, a green credit program will be notified under the Environment Protection Act. This will incentivize environmentally sustainable and responsive actions by companies, individuals, and local bodies, and help mobilize additional resources for such activities. PM Program for Restoration, Awareness, Nourishment, and Amelioration of Mother Earth, PM Pranam, will be launched to incentivize states and union territories to promote alternative fertilizers and balanced use of chemical fertilizers. Go Bardhan Scheme. 500 new waste to wealth plants under Go Bardhan, galvanizing organic bio-agro resources done. Go Bardhan scheme will be established for promoting circular economy. These will include 200 compressed biogas plants, including 75 plants in urban areas, and 300 community or cluster-based plants at a total investment of 10,000 crores. I will refer to this in part B also. In due course, a 5% CBG mandate will be introduced for all organizations marketing natural and biogas. For collection of biomass and distribution of biomanure, appropriate fiscal support will also be provided. Bharatiya Prakritik Kheti Bio Input Resource Centers. Over the next 3 years, we will facilitate 1 crore farmers to adopt natural farming. For this, Honorable Speaker, 10,000 bio input resource centers will be set up, creating a national level distributed micro fertilizer and pesticide manufacturing network. Mishti. Building on India's success in afforestation, mangrove initiative for shoreline habitats and tangible incomes, Mishti, will be taken up for mangrove plantation along the coastline and on salt pan lands wherever feasible through convergence between Manrega, Campa, Fund and other sources. Amrit Dharohar. Wetlands are vital ecosystems which sustain biological diversity. In his latest Mann Ki Baat, the Prime Minister said, now, I quote, now the total number of Ramsar sites in our country has increased to 75, whereas before 2014, there were only 26, unquote. Local communities have always been at the forefront of conservation efforts. The government will promote their unique conservation values through Amrit Dharohar, a scheme that will be implemented over the next 3 years to encourage optimal use of wetlands and enhance biodiversity, carbon stock, ecotourism opportunities, and income generation for local communities. Coastal shipping. Coastal shipping will be promoted as the energy efficient and lower cost mode of transport, both for passengers and freight, through PPP mode with viability gap funding. Vehicle replacement. Vehicle replacement is an important continuing policy, replacing the old
replacing, absolutely, thank you. Replacing old polluting vehicles, maybe applicable, right? Replacing old polluting vehicles is an important part of greening our economy. In furtherance of the vehicle scrapping policy mentioned in Budget 21-22, I have allocated adequate funds to scrap old vehicles of the central government. States will also be supported in replacing old vehicles and old state ambulances. Honorable Speaker, sir, I move to priority 6, youth power. To empower our youth and help the Amrit PD realize their dreams, we have formulated the national education policy, which is very wide in its scope, but one of the things is also to focus on skilling, adopted economic policies that facilitate job creation at scale and have supported business opportunities. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 4.0 will be launched to skill lakhs of youth within the next 3 years. On-job training, industry partnership, and alignment of courses with needs of industry will be emphasized. The scheme will also cover new age courses for Industry 4.0 like coding, AI, robotics, mechatronics, IoT, 3D printing, drones, and other soft skills. To skill youth for international opportunities, 30 Skill India International Centers will be set up across different states. The digital ecosystem for skilling will be further expanded with the launch of a unified Skill India digital platform for enabling demand-based formal skilling, linking with employers including MSMEs, and facilitating access to entrepreneurship schemes. To provide stipend support to 47 lakh youths in 3 years, direct benefit transfer under a pan-India national apprenticeship promotion scheme will be rolled out. Tourism. Honorable Speaker, sir, with an integrated and innovative approach, at least 50 destinations will be selected through challenge mode. In addition to aspects such as physical connectivity, virtual connectivity, tourist guides, high standards for food streets, and tourist security, all the relevant aspects would be made available on an app to enhance tourist experience. Every destination would be developed as a complete package. The focus of development of tourism would be on domestic as well as foreign tourists. Sector-specific skilling and entrepreneurship development will be dovetailed to achieve the objectives of Dekho Apna Desh initiative. This was launched as an appeal by the Honorable Prime Minister to the middle class to prefer domestic tourism over international tourism. The integrated development of theme-based tourist circuits, the Swadesh Darshan scheme, was also launched. Under the Vibrant Villages program, tourism infrastructure and amenities will be facilitated in border villages. Unity Mall. States will be encouraged to set up a Unity Mall in their state capital or most prominent tourism center or the financial capital for promotion and sale of their one district, one product and GI products and other handicraft products, and for providing space for such products of all other states as well. Sir, priority number 7, financial sector.
Our reforms in the financial sector and innovative use of technology have led to financial inclusion at scale, better and faster service delivery, ease of access to credit, and participation in financial markets. This budget proposes to further these measures. Credit guarantee for MSMEs. Last year, I proposed revamping of the credit guarantee scheme for the MSMEs. I am happy to announce that the revamped scheme will take effect from 1st April 2023 through infusion of 9,000 crores in the corpus. This will enable additional collateral-free guaranteed credit of 2 lakh crores of rupees. Further, the cost of credit will be reduced by about 1%. A national financial information registry will be set up to serve as a central repository of financial and ancillary information. This will facilitate efficient flow of credit, promote financial inclusion, and foster financial stability. A new legislative framework will govern this credit public infrastructure and will be designed in consultation with the RBI. To meet the needs of Amrit Kal and to facilitate optimum regulation in the financial sector, public consultation, as necessary and feasible, will be brought to the process of regulation making and issuing subsidiary directions. To simplify, to ease, and to reduce cost of compliance, financial sector regulators will be requested to carry out a comprehensive review of existing regulations. For this, they will consider suggestions from public and regulated entities. Time limits to decide the application under various regulations will also be laid down. Honorable Speaker, sir, to enhance business activities in GIFT IFSC, the following measures will be taken. Delegating powers under the SEZ Act to the IFSCA to avoid dual regulation. Setting up a single window IT system for registration and approval of IFSCA, SEZ authorities, GSTN, RBI, SEBI, and IRDAI. Permitting acquisition financing by IFSC banking units of foreign banks. Establishing a subsidiary of Exim Bank for trade refinancing. Amending IFSCA Act for statutory provisions for arbitration, ancillary services, and avoiding dual regulation under the SEZ Act, and recognizing offshore derivative instruments as valid contracts. Honorable Speaker, sir, data embassy. For countries looking for digital continuity solutions, we will facilitate setting up of their data embassies in GIFT IFSC. Improving governance and investor protection in banking sector. To improve bank governance and enhance investors' protection, certain amendments to the Banking Regulation Act, the Banking Companies Act, and the Reserve Bank of India Act are being proposed. Capacity building in securities market. Honorable Speaker, sir, to build capacity of functionaries and professionals in the securities market, SEBI will be empowered to develop, regulate, maintain, and enforce norms and standards for education in the National Institute of Securities Markets and to recognize award of degrees, diplomas, and certificates. A central processing center will be set up for faster response to companies through centralized handling of various forms filed with field officers under the Companies Act. Reclaiming of shares and dividends.
for investors to reclaim unclaimed shares and unpaid dividends from the Investor Education and Protection Fund Authority with ease, from the Investor Education and Protection Fund Authority with ease, an integrated IT portal will be established. Digital payments continue to find wide acceptance. In 2022, they show an increase of 76% in transaction and 91% in value. Fiscal support for this digital public infrastructure will continue in 2023-2024. आजादी का अमृत महोत्सव, महिला सम्मान बचत पत्र. For commemorating Azadi Ka Amrit Mahotsav, a one-time new small savings scheme, Mahila Samman Savings Patra or Savings Certificate, Mahila Samman Savings Certificate will be made available for a 2-year period up to March 2025. This will offer deposit facility up to 2 lakh in the name of a woman or girls for a tenure of 2 years at fixed interest rate of 7.5% with partial withdrawal option. Senior citizens, the maximum deposit limit for senior citizens savings scheme will be enhanced from 15 lakh to 30 lakhs of rupees. The maximum deposit limit for monthly income account scheme will be enhanced from 4.5 lakh to 9 lakh for single account and from 9 lakh to 15 lakh for joint account. Honorable Speaker, sir, fiscal management. 50 years interest-free loan to states. The entire 50-year loan to states has to be spent on capital expenditure within 2023-24. Most of this will be at the discretion of the states, but a part will be conditional on states increasing their actual capital expenditure. Parts of the outlay will also be linked to or allocated for the following purposes: scrapping old government vehicles, urban planning reforms and actions, financing reforms in urban local bodies to make them credit-worthy for municipal bonds, housing for police personnel above or as part of the police station, constructing unity malls, children and adolescent libraries and digital infrastructure, and state share of capital expenditure of central schemes. Honorable Speaker, sir, fiscal deficit of states. States will be allowed a fiscal deficit of 3.5% of GSDP, of which 0.5% will be tied to power sector reforms. Revised estimates 2022 to 2023. The revised estimate, Honorable Speaker, sir, of the total receipts other than borrowing is 24.3 lakh crores, of which the net tax receipts are 20.9 lakh crores. The revised estimate of the total expenditure is 41.9 lakh crores of rupees, of which the capital expenditure is about 7.3 lakh crores. The revised estimate of the fiscal deficit is 6.4% of GDP, adhering to the budget estimate. So budget estimates of 2023-24. Coming to 2023-24, the total receipts other than borrowings and the total expenditure are estimated at 27.2 lakh crores and 45 lakh crores respectively. The net tax receipts are estimated at 23.3 lakh crores. The fiscal deficit is estimated to be 5.9% of the GDP.
In my budget speech for 21-22, I had announced that we plan to continue the path of fiscal consolidation, reaching a fiscal deficit of below 4.5% by 2025-26 with a fairly steady decline over the period. We have adhered to this path, and I reiterate my intention to bring the fiscal deficit below 4.5% of GDP by 2025-26. To finance the fiscal deficit in 2023-24, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.8 lakh crores. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 15.43 lakh crores of rupees. Honorable Speaker, sir, I now move to Part B. Indirect taxes. My indirect tax proposals will aim to promote exports, boost domestic manufacturing, enhance domestic value addition, encourage green energy and mobility. A simplified tax structure with fewer tax rates helps in reducing compliance burden and improving tax administration. I propose to reduce the number of basic customs duty rates on goods other than textiles and agriculture from 21 to 13. As a result, there are minor changes in the basic custom duties, cesses and surcharges on some items including toys, bicycle, automobiles and naphtha. Green mobility. To avoid cascading of taxes on blended compressed natural gas, I propose to exempt excise duty on GST paid compressed biogas contained in it. To further provide impetus to green mobility, customs duty exemptions is being extended to import of capital goods and machinery required for manufacture of lithium-ion cells for batteries used in electrical vehicles as well. Electronics. As a result of various initiatives of the government, including phased manufacturing program, mobile phone production in India has increased from 5.8 crore units valued at about 18,900 crore in 2014-15 to 31 crore units valued at 2,75,000 crore in the last financial year. To further deepen domestic value addition in manufacturing of mobile phones, I propose to provide relief to customs duty. I propose to provide relief in customs duty on import of certain parts and inputs like camera lens and continue the concessional duty on lithium-ion cells for batteries for another year. Similarly, to promote value addition in manufacture of televisions, I propose to reduce the basic customs duty on parts of open cells of TV panels to 2.5%. Electrical. To rectify inversion of duty structure and encourage manufacturing of electric kitchen chimneys, the basic custom duty on electric kitchen chimney is being increased from 7.5% to 15%, and that on heat coils for these is proposed to be reduced from 20% to 15%. Chemicals and petrochemicals. Denatured ethyl alcohol is used in chemical industry. I propose to exempt basic customs duty on it. This will also support the ethanol blending program and facilitate an endeavor for energy transition. Basic customs duty is also being reduced on acid grade fluorospar from 5% to 2.5% to make the domestic fluorochemicals industry competitive. Further, the basic customs duty on crude glycerin for use in manufacture of epichlorohydrin is proposed to be reduced from 7.5% to 2.5%.
the last financial year, marine products recorded the highest export growth, benefiting farmers in the coastal states of the country. To further enhance the export competitiveness of marine products, particularly shrimps, duty is being reduced on key inputs for domestic manufacture of shrimp feed. India is a global leader, as I said in part A, in cutting and polishing of natural diamonds, contributing about 3/4 of the global turnover by value. With the depletion of deposits of natural diamonds, the industry is moving towards lab-grown diamonds, and it holds huge promise. To seize this opportunity, I propose to reduce the basic customs duty on seeds used in their manufacture. Custom duties on doré and bars of gold and platinum were increased earlier this fiscal. I propose to increase the duties on articles made therefrom to enhance the duty differential. I also propose to increase the import duty on silver doors, bars and articles to align them with that on gold and platinum. To facilitate availability of raw materials for the steel sector, exemptions from basic custom duty on raw materials for manufacture of CRGO steel, ferrous scrap and nickel cathode is being continued. Similarly, the concessional BCD of 2.5% on copper scrap is also being continued to ensure the availability of raw materials for secondary copper producers who are mainly in the MSME sectors. Compounded rubber. The basic custom duty rate on compounded rubber is being increased from 10% to 25% or 30 kg, whichever is lower, at par with that of natural rubber other than latex, to curb circumvention of duty. Cigarettes. National calamity contingent duty on specified cigarettes was last revised 3 years ago. This is proposed to be revised upwards by about 16%. Direct taxes. I now come to my direct tax proposals. Honorable Speaker, these proposals aim to maintain continuity and stability of taxation, further simplify and rationalize various provisions to reduce the compliance burden, promote the entrepreneurial spirit, and provide tax relief to citizens. It has been constant endeavor of the Income Tax Department to improve taxpayer services by making compliance easy and smooth. Our taxpayers portal received a maximum of 72 lakh returns in a day, processed more than 6.5 crore returns this year. Average processing period reduced from 93 days in financial year 13-14 to 16 days only now. And 45% of the returns were processed within 24 hours. We intend to further improve this, roll out the next generation common IT return form for taxpayer convenience, and also plan to strengthen the grievance redressal mechanism. MSMEs and professionals. MSMEs are growth engines of our economy. Micro enterprises with turnover up to 2 crore of rupees and certain professionals with turnover of up to 50 lakh rupees can avail the benefit of presumptive taxation. I propose to provide enhanced limits of 3 crore and 75 lakh respectively to the taxpayers whose cash receipts are no more than 5%. Whose cash receipts are no more than 5%. Moreover, to support MSMEs in timely receipt of payments, I propose to allow deduction for expenditure incurred on payments made to them only when payment is actually made. Cooperation. Cooperation is a value to be cherished. In realizing our Prime Minister's goal for Sahkar Se Samriddhi and his resolve to connect the spirit of cooperation with the spirit of Amrit Kal, in addition to the measures proposed in Part A, I have a slew of proposals for the cooperation sector. First, new cooperatives that commence manufacturing activities till 2024 31st March
shall get the benefit of a lower tax rate of 15%, as is presently available to new manufacturing companies. Secondly, I propose to provide an opportunity to sugar cooperatives to claim payments made to sugarcane farmers for the period prior to the assessment year 2016-17 as expenditure. This is expected to provide them a relief of almost 10,000 crores. Thirdly, I am providing a higher limit of 2 lakh per member for cash deposits to loans in cash by primary agricultural cooperative societies and primary cooperative agriculture and rural development banks. I repeat that. Thirdly, I am providing a higher limit of 2 lakh per member for cash deposits to and loans in cash by primary agricultural cooperative societies and primary cooperative agricultural and rural development banks. Similarly, a higher limit of 3 crore for TDS on cash withdrawal is being provided to cooperative societies. Startups. Entrepreneurship is vital for a country's economic development. We have taken a number of measures for startups and they have borne results. India is now the 3rd largest ecosystem for startups globally and ranks 2nd in innovation quality among middle-income countries. I propose to extend the date of incorporation for income tax benefits to startups from 31/3/2023 to 31/3/2024. I further propose to provide the benefit of carry forward of losses on change of shareholding of startups from 7 years of incorporation to 10 years. To reduce the pendency of appeals at commissioner level, I propose to deploy about 100 joint commissioners for disposal of small appeals. We shall also be more selective in taking up cases for scrutiny of returns already received this year. Better targeting of tax concessions. For better targeting of tax concessions and exemptions, I propose to cap deduction from capital gains on investment in residential house under Section 54 and Section 54F to 10 crores. Another proposal with similar intent is to limit income tax exemption from proceeds of insurance policies with very high value. Rationalization. Honorable Speaker, sir, there are a number of proposals relating to rationalization and simplification. Income of authorities, boards, and commissions set up by statutes of union or state for the purpose of housing, development of cities, towns, and villages, and regulating and developing an activity or matter is proposed to be exempted from income tax. Other major measures in this direction are removing the minimum threshold of 10,000 for TDS and clarifying taxability relating to online gaming. Not treating conversion of gold into electronic gold receipts and vice versa as capital gains. Reducing the TDS rate from 30% to 20% on taxable portion of EPF withdrawals in non-PAN cases and taxation on income for market-linked debentures. Other major proposals in the finance bill relate to the following: extension of period of tax benefits to funds relocating to IFSC, GIFT City till 31/3/2025, decriminalization under Section 276A of the Income Tax Act, allowing carry forward of losses on strategic disinvestment, including that of IDBI Bank, and providing EEE status to Agnivir Fund. Personal income tax.
Now I come to what everyone is waiting for. Personal income tax. I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any tax, do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000 rupees. This is only 5% of his or her income. It is a reduction of 25% on what he or she is required to pay now. That is 60,000. So in the place of 60,000, it is now only 45,000. Similarly, an individual with an income of 15 lakh rupees would be required to pay only 1.5 lakh or 10% of his income or her income, a reduction of 20% from the existing liability of 1,87,500 rupees. My third proposal is for the salaried class and the pensioners, including family pensioners, for whom I propose to extend the benefit of standard deduction to the new tax regime. Each salaried person with an income of 15.5 lakh rupees or more will thus stand to benefit by 52,500 rupees. My fourth announcement in personal income tax is regarding the highest tax rate, which in our country is 42.74%. This is among the highest in the world. I propose to reduce the highest surcharge. I propose to reduce the highest surcharge rate from 37% to 25% in the new tax regime. This would result in reduction of the maximum rate. This would result in the reduction of the maximum tax rate to 39%. Lastly, the limit of 3 lakh rupees for tax exemption on leave encashment on retirement of non-government salaried employees was last fixed in the year 2002, when the highest basic pay in the government was only 30,000 rupees per month. In line with the increase in the government salaries, I am proposing to increase this limit to 25 lakh rupees.
We are also making the new income tax regime as the default tax regime. However, citizens will continue to have the option to avail the benefit of the old tax regime. Apart from these, I am also making some other changes as given in the annexure. As a result of these proposals, revenue of about 38,000 crore to 37,000 crore in direct taxes and rupees 1,000 crore in indirect taxes will be foregone, while revenue of about 3,000 crore will be additionally mobilized. Thus, the total revenue foregone is about 35,000 crores annually. Honorable Speaker, sir, with these words, I commend the budget to this August House. Item number 1. लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। भैया खेती में तो जोखिम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। जब AIC का है साथ तो ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। चेक। जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए यहीं से कर लीजिए RBI के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? RBI अधिकृत बैंक, NBFC या डिजिटल लेन-देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। RBI के CM पोर्टल पर ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। भैया खेती में तो जोखिम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। जब AIC का है साथ तो ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बजट 2023 के इस स्पेशल प्रेजेंटेशन में। मैं हूं निखिल और मेरे साथ है मेरी सहयोगी आंचल गुलाटी गुंबर। और अब आपने देखा किस तरह से जो बजट प्रेजेंटेशन था वो पेश किया निर्मला सीतारमण ने, हमारी वित्त मंत्री ने, और तमाम सारी चीज़ें उनके पिटारे से निकली हैं। और सबसे खास बात जो टैक्स एग्जेम्पशन की बात हो रही थी वो उन्होंने पेश किया, बताया कि अब जो नया टैक्स है उसके तहत किस तरह से जो नए टैक्स हैं वो 6 से घटकर अब महज 5 रह गए हैं और 7 लाख रुपए तक जिनकी इनकम है उन्हें कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ी शायद जो लोग इंतजार कर रहे थे मिडिल क्लास, वो सबसे बड़ी खबर यही थी जी। और जिस तरह से अमृतकाल का ये पहला बजट थ्रू सबका प्रयास resulting in जन भागीदारी and targeted support to those in need helped us perform well in trying times. India's rising global profile is because of the several accomplishments, unique world-class digital public infrastructure, example Aadhaar, CoWIN and UPI, COVID vaccination drive in unparalleled scale and speed, proactive role in frontier areas such as achieving the climate-related goals, Mission Life and National Hydrogen Mission. During the COVID-19 pandemic, we ensured that no one goes to bed hungry with a scheme to supply free food grains to over 80 crore persons for 28 months.
Continuing our commitment to ensure food and nutritional security, we are implementing from 1st January 2023 a scheme to supply free food grain to all Antyodaya and priority households for the next 1 year. Under PM Garib Kalyan Anna Yojana, the entire expenditure of about 2 lakh crore will be borne by the central government. In these times, needs of digital India, one-stop solution for identity and address updating, a one-stop solution for reconciliation and updating of identity and address of individuals maintained by various government agencies, regulators and regulated entities will be established using DigiLocker service and Aadhaar as foundational identity. Speaker Sir, common business identifier for the business establishments required to have a permanent account number. The PAN will be used as the common identifier for all digital systems of specified government agencies. This will bring ease of doing business and it will be facilitated through a legal mandate. For obviating the need for separate submission of same information to different government agencies, a system of unified filing process will be set up. Such filing of information or return in simplified forms on a common portal will be shared with other agencies as per the filer's choice. Vivad se Vishwas 1, relief for MSMEs. In cases of failure by MSMEs to execute contracts during the COVID period, 95% of the forfeited amount relating to the bid or performance security will be returned to them by government and government undertakings. This will provide relief to the MSMEs. Vivad se Vishwas 2, settling contractual disputes. To settle contractual disputes of government and government undertakings wherein arbitral award is under challenge in a court, a voluntary settlement scheme with standardized terms will be introduced. This will be done by offering graded settlement terms depending on pendency level of the dispute. The state support mission of Niti Aayog will be continued for 3 years for our collective efforts towards national priorities. Result-based financing. To better allocate scarce resources for competing development needs, the financing of select schemes will be changed on a pilot basis from input-based to result-based. E-courts. For efficient administration of justice, Phase 3 of e-courts projects Phase 3 of the e-courts project will be launched with an outlay of 7,000 crores. Fintech services in India have been facilitated by our digital public infrastructure, including Aadhaar, PM Jan Dhan Yojana, Video, KYC, India Stack, and UPI. To enable more fintech innovative services, the scope of documents available in DigiLocker for individuals will be expanded.